I'm here for the strip for today's game. It's pitch number 8 and it was used in the first game for this Super 8 round. Well, if you can hear it, it is a very hard deck. Got a tinted dry grass on it, which might explain that it will skid on with the fast bowlers. Well, early on, I think the batters will enjoy their stroke play as they did in the previous game when this strip was used. Well, bowlers, on the surface, you need to come prepared. And when I say prepared, you need to have specific plans against the batters. Early on with the new ball, I would prefer to hit that hard length within the stumps. Don't allow the batters to free their arms and go for the big shots. Later on, you might need to be accurate with wider Yorkers or the slow ones. But remember, line and length is the key. Same strip that was used for day one of Super 8. What do you make of it today? Well, I think there hasn't been any drastic change in the pitch. Whichever you switch on, it is quite similar. I think the batting approach needs to be more sensible. The shot selection needs to be better. Otherwise, I've seen whoever has played conventional cricket have been pretty much successful on this pitch. It's just that guys picking the wrong time and the wrong bowler to attack at times, and the situation is not there. And that is where they have been losing wickets. And at times, when it's on the slower side, the change of pace, like Marina said, of a good length, just short of a length, is something to look for. And in the death, whichever team has bowled good Yorkers, they have done well. And talking about the pitch, it doesn't play a part. Let's see if toss will have something to say in today's proceedings. Ali Yunus was in the middle with both the captains. It's Lahore Blues taking on mighty Peshawar, and we are all set for the toss. The two captains alongside me, Hussain Talat for Lahore Blues, Iftikhar Ahmed for Peshawar, Professor Javed Malik, the match referee. And it seems like Iftikhar is going to give it a spin. Let's do it. Heads. Heads is the call. And it is a head. Hussain Talat, finally, कुछ आपकी फेवर में गया, क्या करेंगे और क्यों? बॉलिंग करेंगे हम पहले जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर और स्लोनेस नज़र आ रहा है पिच का उसको यूज़ करेंगे और कम से कम टोटल पे इन्हें रोकेंगे दो बड़े डिफीट्स हो गए कैसे आप इस डिफीट से इतने बड़े डिफीट से बाहर आएंगे बिल्कुल हम लोगों ने एज ए टीम बैठ के बात किया जो हमारे लैप्सेस थे उस पर हमने लोगों ने बात की और सारे लड़के मोटिवेटेड भी हैं कि जो हम लोगों ने माइनर गलतियां की हैं उसको ओवरकम करेंगे और इस मैच में अच्छा कमबैक करेंगे टीम सिलेक्शन की अगर बात करें कहीं ना कहीं आपको एज अ कैप्टन लगता है कि बैटिंग शॉर्ट है थोड़ी आपकी इस टूर्नामेंट में मेरा ख्याल है एक बैट्समैन हमें नीचे एक ज़रूरत थी पर एज ए बैटिंग यूनिट हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम लोग उसको लंबा लेके जाए और बाद में हमारे पास नीचे जो पावर हिटर्स हैं उन्होंने एट टाइम्स हमें करके दिया है तो जब हम ऊपर से अच्छी पार्टनरशिप देंगे तो हमें अच्छा फिनिश करके देंगे आज की कोई टीम चेंजेस नहीं सेम टीम ऑल द बेस्ट थैंक यू इफ्तिखार अहमद टॉस हार गए जीते तो क्या इरादे थे टॉस जीतते तो बॉलिंग कर दे मगर वही बात कि आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है चाहे आप टॉस हारे या जीते मगर आपके हाथ में है अच्छी क्रिकेट खेलना हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में आप जिक्र करते हैं ब्रांडेड क्रिकेट खेलने का इंटेंट का आप सिर्फ कहते नहीं करते भी हैं नहीं करते भी आप लोग को नहीं दिख रहा जी हाँ दिख रहा है वही दिख रहा है हाँ। आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्रिकेट खेल रहे और इनको कंटिन्यू करेंगे ऑल द बेस्ट अच्छी को टीम न्यूज़ बताते ये जाते जाते दो चेंजेस है वो आया इसरारुल्लाह आया और इमरान सीनियर ऑल द बेस्ट थैंक यू Right, you heard it from the captains. The news is that Lahore Blues has won the toss and they will be bowling first. Well, Lahore Blues are going with no changes, but Peshawar has made 2 changes. Israrullah has come in and so has Muhammad Ilyas. Imagine Muhammad Ilyas not getting a chance in this tournament up until now. Quite a good bowler, a decent bowler. Israrullah also a very handy batter. Yes, Israrullah is definitely a left-hander who can go big and also he can play the long innings that he's known for. Then Imran Khan Senior, with the new ball he can swing it, with the old ball he can reverse it and he is good at the death. So he is somebody who can be very handy. Talk about Lahore Blues, even after 2 defeats, they pretty much settled in terms of their opinions. They don't think they need any changes. I think these guys with their pictures on the top, this top 6, there the sense needs to prevail. They are the ones who can carry Lahore to a decent total. And the shots that they played in the last game, they better not repeat for their own good of the team. And the bowlers, then they will have a chance because Peshawar is a strong side. One person in particular in this lineup that I'm really disappointed with, and he was on a big high last year, Qasim Akram. All of a sudden, his progress
has stopped. Even if I'm not wrong, correct me if I'm wrong, he's regressed. What do you make of him? I think he needs to take time. He seems in a bit of a hurry. He comes in, couple of balls, and then he starts to go big. And that is where his game sense should now start to develop. He should know what the situation demands from him, or he needs to trust his ability. Even if it takes a few balls to get started, then he is a kind of a player with his ability can make it up. So it's not all about being too fast and too furious. You have to be very sensible. And one more thing, I think Usman Qadir bowled well, started well, 2 overs, 4 runs. Yes, he got hit for 2 sixes by Azam Khan, but you need to bowl the entire spell. The poor guy, whenever he bowls well, we have seen him getting changed all over the season. So he needs to put on, you cannot prepare leg spinners like this. If you just give them overs till he's bowling well, and if a batsman hit 2 good shots, you take him off. That's not the way to give confidence. We just heard the bell, so umpires will be on the way out shortly. Quickly, what could be a good score here for Peshawar, looking at their prowess? I think if Peshawar can cross 170, 160, and definitely with their bowling and experience, Lahore will have a tough time, but Lahore need to stop them till there because they have the ability to score even bigger. Thank you for your thoughts, Salman. Really appreciate that. It's just about time to wrap it up from here and join our commentators upstairs. It's over to you, Akil. बहुत शुक्रिया शाह फैसल। चमकता दमकता इतवार है और उसमें मुकाबला एक तरफ अब तक टॉप परफॉर्म करती हुई पेशावर का, जो कि सुपर 8 के मरहले में कोई हारे नहीं है और 3 लगातार मुकाबले जीतती हुई आ रही है। लेकिन आज टॉस जीता है लाहौर ब्लूज की टीम ने, जो कि खुद शिद्दत से फतह के मुंतज़िर हैं, लेकिन एक जगरनॉट का उनको मुकाबला करना पड़ेगा आज, और इससे बड़ा इम्तहान शायद उनको इस वक्त तक सामना ना करना पड़े, क्योंकि और भी टीम्स हैं जिन्होंने फतूहात हासिल की हैं, लेकिन ये एक पावर हाउस समझी जा सकती है। मरीना मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मरीना, एक अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है। पेशावर रेड हॉट है और दूसरी तरफ रेड किट में लाहौर ब्लूज। शुक्रिया अकील समर, बिल्कुल ये एक अच्छा मुकाबला होगा। लाहौर को ऑब्वियसली जैसे बात की थी हुसैन तलत ने टॉस पे भी के बैठ के इन्होंने थोड़ा रिविजिट किया इनके प्लान्स और एक्सिक्यूशंस को, और आज इनके लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, क्योंकि पेशावर दे आर द यू कैन से जायंटी माइटी जायंट्स, एंड आई थिंक बहुत ही प्रिसाइज प्लानिंग के साथ इनको अगर अच्छा स्टार्ट ही हासिल कर लेते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर ही पुट ऑन कर सकते हैं पेशावर पे। ऐसे एक तरफ है नौजवान हारिस, जो कि पिछले 2 सीजन से ऐसे मंजर आम पर आए हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन उनको अपने आप को डिफाइन करने के लिए एक लंबी इनिंग्स खेलने का मौका मिल सकता है इन पिक्चर परफेक्ट कंडीशंस में। और दूसरी तरफ है सीज़न को किसी ख्वाब की मानंद गुजारने वाले साहबजादा फरहान, जो कि क्लियरली इस वक्त तक जो पिछले सीज़न से अगर हम शुमार करते हैं 2 सालों के दौरान भी और इस साल के दौरान किसी भी फॉर्मेट में हर तरफ से उन्होंने रन्स के अंबार लगा रखे हैं। और जहाँ कराची की पिच का सवाल है, जहाँ पर आपको अच्छा बाउंस मिल रहा है और ऑफ द बैक फुट आपको शॉट लगाने का मौका हासिल हो रहा है, इसमें दोनों के दरमियान एक अच्छा इम्तजाज बन सकता है, क्योंकि हारिस लाइट ऑन फीट है, वो कदमों का बड़ा ज़ोरदार किस्म का इस्तेमाल करते हैं। साहबजादा फरहान लेंथ को जल्द पिक करके अपने आप को फ़ौरन एडजस्ट करके शॉट खेलने के लिए जाते हैं। साहबजादा फरहान का ये सीज़न तो ख़ास है ही, लेकिन 72 मैचेस में उन्होंने यूं भी 30 की एवरेज के साथ ऑलमोस्ट 1800 रन्स बना रखे हैं, 2 सेंचुरीज इन्होंने बनाई हैं। जबकि दूसरी जानिब है पाकिस्तान की नेक्स्ट बिग थिंग करार दिए जाने वाले, लेकिन अब तक एक मरतबा फिर अपने आप को दरियाफ्त करने के लिए पहुंचे हैं T20 के इस फॉर्मेट में। 61 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं जमा उम्री में, 7 50s उन्होंने बनाई हैं और शानदार उड़ान भरता हुआ स्ट्राइक रेट उनका 148 का। दूसरी तरफ लाहौर की टीम जिसने कम बैक किया था जैसे पिछले मुकाबले में कराची वाइट्स के खिलाफ इसी ग्राउंड में, और उसके बाद भी इनको परफॉर्म करने का मौका मिला, उसको स्पिनर के साथ शुरुआत करने का चांस मिल रहा है। काशिफ भट्टी जो कि इससे पहले भी इनिंग्स की शुरुआत कर चुके हैं वहीं से द लेफ्ट आर्म बॉलर के, वो आ रहे हैं गेंद करने के लिए, और ये बैटिंग एबिलिटी का कदमों का इस्तेमाल कर अपने आप को सेटल करने का सवाल होगा हारिस और ख़ास तौर पर साहबजादा फरहान का। तो सब कुछ ठीक है इस एतवार की सपहर मैच की शुरुआत के लिए, जहाँ पर स्लाइटली नॉन ट्रेडिशनल फील्ड के साथ जा रहे हैं, जो वाइडर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर लेकर रखे हैं, जो कि फ्रंट ऑफ स्क्वायर आमतौर पर आपको इस पोजीशन में दिखाई नहीं देते, मैक्सिमम टुवर्ड्स मिड विकेट, स्क्वायरिश मिड विकेट या स्क्वायर लेग पर एक फील्डर है। थर्ड मैन के रीजन को कम से कम हारिस के लिए खाली छोड़ने का फैसला किया है। सो लाहौर ब्लूज वर्सेस पेशावर, टाइम टू प्ले। पहली गेंद पर ऊंचा शॉट लॉन्च कर दिया है और फील्डर के सर के ऊपर से रवाना। हारिस ने जवाब दिया कि वो किस मेटल के बने हैं लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ खेलने के लिए। फर्स्ट बॉल 6।
ये बिल्कुल नहीं रुकेंगे, ये इनका कन्वेंशनल प्ले है। हारिस का बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑन साइड पे खेलना, और आई एम नॉट श्योर कि काशिफ भट्टी की क्या प्लानिंग है, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है और उसके बाद स्क्वायर जो है वो बहुत स्क्वायर, जो डीप स्क्वायर है वो स्क्वायरिश है। तो अगर ऑफ साइड ऑफ स्टम्प भी ये बॉल की प्लानिंग करते हैं तो फिर भी जो शॉट लगेगी वो फ्रंट ऑफ स्क्वायर लगेगी, मिड विकेट लगेगी, और अगर ये विद इन स्टम्प्स रखते हैं तो यहाँ पे तो हारिस बिल्कुल नहीं बख्शेंगे इन्हें। ये लगातार रोजाना मैचेस हो रहे हैं और आज ऑन साइड पर जिस तरफ से अभी बॉलिंग हो रही है बाउंड्री भी मुख्तसर है, 5 यार्ड का फर्क है, जिसको पहली गेंद पर एक्सप्लॉइट करने का फैसला किया। फील्डर अब स्लाइटली ज्यादा हट गए हैं, मिड विकेट की पोजीशन की जानिब आ गए हैं, जो कि इससे पहले स्क्वायरिश मिड विकेट पर मौजूद थे उनके उसी छक्के को देखते हुए, लेकिन वाइड एंड लॉन्ग ऑफ पे जूं के तूं बरकरार है। इसी फील्ड की मैं बात कर रही थी कि अगर तो इन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है ऑफ साइड पे, लॉन्ग ऑफ लिया हुआ है, तो फिर आपको ये फील्डर जो है वो काउ कॉर्निश या फिर जो मिड विकेट है उस एरिया में रखना चाहिए, और वो अब इन्होंने किया है एक छक्का खाने के बाद। लेकिन वंस अगेन उठा दिया है, गेंद हवा में लेकिन सर के ऊपर से चली जाएगी, पीछे की जाने भागे निसार, वो भी नहीं रोक पाएंगे। दूसरी बाउंड्री पहले ओवर की, पहला चौका पेशावर का। जारे आना बैटिंग जारी रहेगी हारिस की जानिब से, और स्पिनर्स को ये आड़े हाथों लेते हैं। अर्ली ऑन थोड़ा सा अगर फास्ट बॉलर्स अच्छी पेस से गेंद करें तब ये ट्रबल क्रिएट हो सकता है, लेकिन स्पिनर्स को ये नहीं बख्शते। कन्वेंशनल स्वीप खेलेंगे, स्लॉक करेंगे, कदमों का इस्तेमाल करेंगे। यस, कदमों का इस्तेमाल एग्जैक्टली किया और स्लाइटली लिम्प करते हुए रन भी मुकम्मल किया। लेग बाय का रन मिला 11 बिना किसी नुकसान के पेशावर पहले के बाद। दोनों की अप्रोचेस ऑलमोस्ट सेम है। हारिस ऑब्वियसली टेम्परामेंट अगर आप देखा जाए तो यंगस्टर हैं, उस तरह टेम्परामेंट एक्सपीरियंस इनके पास आया नहीं है, बहुत ही जारे आना क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पहली बॉल से इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं। जहाँ तक साहिबजादा फरहान की बात है, हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि इन्होंने स्किल वाइज भी अपने आप को इम्प्रूव किया है और उसके बाद टेम्परामेंट वाइज भी इम्प्रूव किया है। हारिस को थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा क्योंकि जब कदमों का इस्तेमाल उन्होंने किया था शायद जो नी रोल है वहां पे बॉल हिट किया। ये सब तक पेशावर की टीम मरीना जीतती हुई आई है, मासवाए पहले मैच के जहां पर कराची ब्लूज के खिलाफ इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान कप की फातेह टीम ये रही है और हमेशा से जो पिछले 5-6 साल के दौरान इनको खिलाड़ियों के हम ऑलमोस्ट हर गेम में जहां पर इनकी टीम और फाटा या एबटाबाद की परफॉर्म कर रही है, इनकी इस बैटिंग एबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं और अभी भी इनका टूर्नामेंट बड़ा शानदार गुजरा और जिस अंदाज से इफ्तिखार की आमद ने इस टीम को 4 चांद लगा दिए हैं, उसके बाद वो और रावलपिंडी क्लियरली टेबल के टॉप पे भी हैं और उसके साथ साथ फेवरेट्स भी बन गए हैं आगे बढ़ने के लिए। दूसरी जानिब उमैद आसिफ आ रहे हैं, उनमें तजर्बे का इस्तेमाल करने के लिए क्रीज पर ही मौजूद रहेंगे ट्रीटमेंट लेने के बाद, जहां पर गेंद लगता है कि पैडिंग एरिया से नीचे इनके हिट कर गई थी टुवर्ड्स साइडवेज और इसकी वजह से इनको ये ट्रीटमेंट लेनी पड़ी और अब तैयार नजर आते हैं। सो वंस अगेन लुकिंग एट द फील्ड पोजीशन, आ गए हैं अपने ट्रेडिशनल थर्ड मैन पर हुनैन और स्क्वायर लेग पर एक फील्डर काशिफ की सूरत में। शानदार डिलीवरी के साथ शुरुआत, लंबे कद काट के हामिल उमैद आसिफ ब्लॉक होल में गेंद की और अच्छा जवाब दिया हारिस ने इसको ब्लॉक करके। यहाँ पे लेंथ बहुत मैटर करेगी क्योंकि हारिस कन्वेंशनली प्रेफर करते हैं ऑन साइड, तो अगर हार्ड लेंथ इनको दी गई, ऑफर की गई तो ये चैलेंज टेक ऑन करते हैं। अगर थोड़ा सा आगे जैसे ये यॉर्कर बॉल था, परफेक्ट बॉल था, या इवन ड्राइव के लिए भी इनवाइट करें हारिस को क्योंकि इनका बल्ला उतना कंट्रोल में नहीं रहता, बॉडी से वे खेलते हैं तो वहां पे ज्यादा अच्छी टाइमिंग हासिल नहीं कर पाते। मुसलसल बेताब हैं अपने रन्स हासिल करने के लिए और ये शॉट जो कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट में शायद आखिरी ओवर्स में या फिर जितनी तेज़ी के साथ आपको नेट्स में प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है देखते जा रहे हैं, लेकिन कनेक्ट करना उतना ही रिस्की हो जाता है खासतौर पर इनिंग्स के लम्हात में मरीना। स्पेशली जब अर्ली ऑन आप आते हैं तो आपकी आई सेट नहीं होती, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी नहीं होती और हारिस का ये एक कह सकते हैं कि खासियत इनकी रही है कि आते ही सारी शॉट्स ऑन ऑफर कर देते हैं, तो थोड़ा सा टेम्परामेंट में इनको अपने काम करना पड़ेगा। टैलेंट पोटेंशियल है लेकिन डेवलप करनी पड़ेगी इनिंग्स इन्हें। शानदार डिलीवरी एक बार दबा फिर ये देखते हुए कि फिर निकलेंगे, फिर पलटेंगे, झपटेंगे और ऐसा कोई रन निकालने की कोशिश करेंगे, हिलने का मौका नहीं दिया और हारिस ने उनको एक मरतबा फिर क्रेडिट, क्योंकि ये जिस पोजीशन में जा रहे थे इससे पहले खेलने के लिए इंतहाई ऑकवर्ड हालत में जा सकते थे लेकिन अच्छा ब्लॉक किया।
अच्छी बॉल उमैद आसिफ की, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे और हारिस ताक में रहते हैं कि थोड़ा सा भी खिंचा हुआ लेंथ हो उसको बिहाइंड स्क्वायर खेल दें या स्लॉक कर दें मिड विकेट के एरिया में। बहुत ज़्यादा इन्हें ऑफ साइड पे खेलते हमें कम ही नज़र आते हैं अनटिल और अनलेस खिंची हुई गेंद ना हो आउटसाइड ऑफ स्टंप। यस, वाइडर फाइन लेग या लॉन्ग लेग पर एक फील्डर आ गए, जबकि स्क्वायर लेग पर मौजूद थे इससे पहले एक फील्डर, उनको वापस लाने का फैसला किया है। वी बनाई हुई है इनके लिए दायरे के पीछे और एक मरतबा फिर कुछ तब्दीली है, बल्कि थर्ड मैन को भी बंदा लाने का फैसला किया है। तो एक मरतबा फिर शॉर्ट डिलीवरी ऑन दी ऑफर हो सकती है, डिपेंडेंट के ये कोई डबल ब्लो देने की कोशिश ना करें। इंटरेस्टिंग होगा कैसे हारिस मुकाबला करते हैं। रन हासिल होंगे, बड़े तेज दौड़ते हुए आए और अच्छी ड्राइव के जरिए से हुसैन तलत ने इस गेंद को चौके के लिए जाने से रोका। मैं इसी लेंथ की बात कर रही थी, ऑफ साइड पे अगर थोड़ा सा ड्राइव वाली बॉल इनको कराई जाए तो ये कन्वेंशनल ड्राइव नहीं मारते, खड़े खड़े खेल देते हैं, बैट आगे निकल जाता है इनका और ये कुछ उसी से मिलती जुलती शॉट थी। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, इसलिए अगर इन पे होमवर्क हुआ हो तो उमैद आसिफ और हुसैन तलत दोनों के पास प्लान जरूर होना चाहिए इनके अगेंस्ट। हारिस को आप बहुत देर नहीं रोक सकते, गेंद पे विड्थ हासिल हुई और फौरन इस पे झपट पड़े कवर्स की जाने में अपने पहले चौके के लिए। हारिस और लेंथ, ये दो चीजें आपको नजर में रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, खिंची हुई लेंथ का इंतजार करते हैं, सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करते हैं, कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, वेट किया। आइडियल लेंथ इनको मिल गई थी और लाजवाब टाइमिंग और प्लेसमेंट भी। ये आसान पिकिंग्स है इनके लिए, इनको जितना गेंद आगे कराया जाएगा वहां पे कामयाबी हासिल करने के ज्यादा चांसेस हैं उमैद आसिफ के। और इंटरेस्टिंग ये कि हर गेंद के साथ इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी फील्ड को तब्दील किया है। इससे पहले जब वो ब्लॉक होल में भी डिलीवरीज कर रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कायम रखा, लेकिन अब एक मरतबा फिर बैकवर्ड पॉइंट पर प्रोटेक्शन लेने का फैसला किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर भी। और एक मरतबा फिर राइट इनटू द ब्लॉक होल डिप करता हुआ यॉर्कर। और देखिए अगर आप इसके बाद हारिस को तो अपने आप को कोस रहे हैं, हालांकि उन्होंने अच्छा ब्लॉक किया, चौका भी हासिल किया। इस ओवर में बेताब हैं बड़े रन्स के लिए, 17 बिना किसी नुकसान के पेशावर। काफी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, साहिबजादा फरहान, आदिल अमीन जो कि ओपन नहीं कर रहे, हारिस नॉर्मली करते हैं, नबीगुल इसरारुल्लाह उनकी वापसी हुई है, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, ये क्या ऐसा नाम है जिससे सारे बॉलर्स डरते हैं। मोहम्मद इलियास भी एंड पे आके अच्छी हिटिंग कर लेते हैं और इमरान खान सीनियर भी आज वापस प्लेइंग 11 में शामिल हुए। काफी बैलेंस साइड है ये और तजर्बा भी है, साथ यंगस्टर्स भी हैं इनके पास। ठीक है, ठीक है। इस बड़ी तादाद में इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज याद रहे कि अब्बास आफरीदी टीम को ज्वाइन नहीं कर सके अपने वायरल फीवर की वजह से, जो कि उम्मीद करते हैं कि जितने हमारे मेहमान हैं मरीना आपके समेत वो सब ठीक रहेंगे। और वैसे भी हम बार बार जिक्र और उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए, कराची में सर्दी है लेकिन फिलहाल बड़ी तेज धूप निकली हुई है। काशिफ भट्टी दूसरे ओवर के लिए, साहबजादा फरहान को 12 गेंदों इंतजार के बाद अपनी पहली गेंद खेलने का मौका मिला है। और एक मरतबा फिर हारिस का ये शो देखेंगे। सो फार जस्ट वन डिलीवरी, उसको अगर हटा के मॉनिटर करें तो इट हैज बीन हारिस वर्सेस लाहौर ब्लूज सो फार, और उन्होंने 12 पे 16 रन बना रखे हैं और इब्तिदा से ही वो अपने टैलेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और अपने रिस्क वाले शॉट्स भी दिखा रहे हैं। एक मरतबा फिर गेंद हवा में गई। हर गेंद को ऑन साइड पे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं हारिस। थोड़ा सा क्विकर बॉल था ये और रूम भी नहीं दिया, पैड्स की शायद टारगेट में बॉल करना चाह रहे हैं काशिफ भट्टी, जो कि अच्छा प्लॉय होगा इस फील्ड पोजीशन के साथ। रूम बनाकर खेलने के लिए गए और एक मरतबा फिर वो रूम बनाया अपने लिए पलट के, जो कि शायद झपट के हासिल नहीं हो रहा था। खूबसूरत चौका हारिस का। थोड़ा से भी अगर आप चूकेंगे लेंथ में तो आपको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे हारिस, क्योंकि जिस महारत के साथ ये अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए खड़े खड़े खेला, ज्यादा फुटवर्क नजर नहीं आया, रूम जरूर बनाया था क्योंकि पिछला गेंद अंदर लाए थे। लाजवाब चौका और अब फ्लिक कर दिया है, पूरा खाली रीजन मौजूद है। ये देखने की चीज है हारिस की बैटिंग, बार बार देखिए, रिस्क लिया, रिवॉर्ड भी पूरा मिल रहा है हारिस को, पावर प्ले का पूरा फायदा, बैक टू बैक चौके। थोड़ा सोचना पड़ेगा काशिफ भट्टी को भी, हुसैन तलत को, क्योंकि जो प्रोटेक्शन इन्होंने ली हुई है वो सामने की ली हुई है और एक गेंद भी अभी तक हारिस ने सामने उठा के नहीं खेला। बिहाइंड स्क्वायर और स्क्वायर दोनों जानब खेल रहे हैं।
कदमों का इस्तेमाल, सीधा तेज तर्रार तीर की मानन छक्का ज्यादा चला गया। हारिस का दूसरा मैक्सिमम। वन मैन आर्मी बने हुए पेशावर के लाहौर ब्लूज के खिलाफ हारिस। मेरा ख्याल है मेरा चैलेंज इन्होंने कबूल किया और सीधा खेला, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, सेटल नहीं होने दे रहे। और ये ऐसी क्रिकेट खेलते हैं, इनको नहीं फर्क पड़ता कि क्या सिचुएशन है, ये अपनी शॉट्स दिखाएंगे और प्रेशर डालेंगे बॉलर पे। बाप तो बैकफुट निकाला है, बड़ा लंबा चेज है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। दो फील्डर्स को बड़े खूबसूरत अंदाज से बीट करके गैप निकालने में कामयाब रहे। अंधाधुंध हिटिंग की है। इस ओवर में 19 रन दिए काशिफ ने, 36 बिना किसी नुकसान के पेशावर। काशिफ भट्टी को आजमाने का जो फैसला था वो ज्यादा कारआमद साबित हुआ नहीं हुसैन तलत के लिए, काफी महंगे साबित हुए। और ये गिवन फैक्ट है क्योंकि हारिस को अगर स्पिनर्स अर्ली ऑन मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा सेट हो जाते हैं। सिर्फ 17 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 36 में से 34 रन उन्हीं के हैं। फास्ट बॉल्स पे थोड़ा सा रिलाई करना पड़ेगा। उमैद आसिफ ने अच्छी बॉलिंग जरूर की है लेकिन दूसरे एंड से भी मेरा ख्याल है कि अब चेंज की जरूरत है। उमैद आसिफ जितने बेताब थे अपनी फील्ड पोजीशन को तब्दील करने के लिए, उतने ही ज़्यादा रिलेक्टेंट थे काशिफ भट्टी। उन्होंने उसी फील्ड के साथ कमोबेश अपनी तमाम गेंदें की जिससे शुरुआत की थी। साहबजादा फरहान ने कुछ देर हवा में खेला लेकिन डायगोनल भागते हुए ऑलमोस्ट अपने दूसरे एंड पे चले गए। और वो माइंड नहीं करेंगे इस शो को देखने के लिए जो कि हारिस पेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी इनिंग्स के बाद सिर्फ एक तशनगी कभी कभार बाकी रह जाती है कि आप इस इनिंग्स को लंबा लेके चलें। और वो जो गियर गो के 20 ओवर्स का खेल है उसमें बहुत आपको ऊपर नीचे करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अपने आप को एडजस्ट करें। पिछले ओवर में बड़ी जांफशानी के साथ मुकाबला किया था उमैद आसिफ के इन डिपर्स का, लेकिन अब देखना होगा कि किस अंदाज से वो समझ पाते हैं। ऐसे शानदार ओवर के बाद शायद शाकीन और पेशावर के कप्तान को सब मुतहमिल हो सकते हैं लो डाउन ओवर के। लेकिन हारिस कहां रुकने वाले हैं। एज और गेंद एंड स्टंप्स के पीछे से जाती चली गई। मुख्तसर तरीन बाउंड्री, किस्मत का पूरा फायदा उठाया हारिस की ये शाम। आज के दिन एक और छक्का। रोकने का नाम नहीं ले रहे, ना रुक रहे हैं। और अगेन वही बात है कि आप अगर उनका स्टांस भी देखें तो वो ओपन स्टांस के साथ खड़े हैं, शॉर्टर लेंथ की ताक में। और इस बार मिल जरूर गई थी, स्विंग हार्ड किया था जो 6 रन के लिए टॉप एज गया, लेकिन आसान नहीं है फुलर लेंथ पे बार बार बॉल करना। लेकिन उमैद आसिफ को ये चांस लेना पड़ेगा अगर तो हारिस को रोकना है। एंड दिस इज हारिस फॉर यू। गेंद को उठा दिया, एक मरतबा फिर हवा में गई है लेकिन दो फील्डर्स के गेंद बीच में गिर जाएगी। काशिफ भट्टी पहुंचे इस गेंद को उठाने के लिए। 248 लड़काने के खिलाफ बनाए थे यहाँ पे पेशावर ने, और जो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का मरीना सबसे बड़ा टोटल उन्होंने T20 फॉर्मेट का बना दिया था। लगता है कि उसको भी तोड़ने के पीछे पड़े हैं शॉट सिलेक्शन से। अब तक उन्होंने जो क्रिकेटिंग शॉट खेलने का रूम बनाया वो ज़बरदस्त है, लेकिन जहाँ इम्प्रोवाइज करने के लिए गए हैं वहाँ लग रहे हैं कि चूक रहे हैं। और कोई मजाका नहीं है कि वो फ्रंट ऑफ स्क्वायर और इसी अंदाज से जैसे आप कह रहे थे कि सीधा खेलते रहें और रन समेटते रहें। आन की आन में 19 पे 41 बना लिए। पॉकेट साइज डायनामाइट हारिस ने। फरहान अब फिर अगली गेंद का सामना करेंगे और अब साहबजादा फरहान को लॉन्च करने का मौका मिला। ये मिसाइल की मानंद जाती चली जा रही है। 50 भी मुकम्मल हो गए पेशावर के। आखिरकार साहबजादा फरहान ने भी सोचा कि मैं पीछे क्यों रह जाऊं। लेंथ मैंने पिच पे पहले भी पिच रिपोर्ट में मेंशन की थी कि यहाँ पे लेंथ बहुत मैटर करेगी, और अगर आप थोड़ा सा भी रूम दे देंगे बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने में तो फिर महंगा साबित होगा। और यही हो रहा है यहाँ पे गो के साथ ज़्यादा फरहान थे लेकिन टाइम मिल गया था थोड़ा सा अपने अगली लेग को क्लियर करके इन्होंने थ्रू द लाइन खेला। बहुत ही दिल का स्ट्रोक था ये 6 रन के लिए। वक्त लग गया गेंद को लाने में और उमैद आसिफ के हौसले मुज्तमा करने में भी। वो भी अब लगता है कि अनलेस के विकेट हासिल करें वो इस एंड से बरकरार नहीं रह पाएंगे। काशिफ भट्टी भी रिप्लेस होंगे दूसरे एंड से। एक मरतबा फिर रिस्की रन रिस्की शॉट लेकिन मुकम्मल किया। जब जब गेंद आगे किया है, चाहे वो उमैद हो या काशिफ भट्टी हो, आपने देखा कि चाहे फरहान या हारिस फेस कर रहे हो थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया उन्होंने, इतने कंट्रोल में नजर नहीं आए। और इस चीज को जल्दी पिक करना पड़ता है स्पेशली जब ऐसी जारहाना बैटिंग हो रही हो।
जो नेचुरल अटैकिंग लेंथ है हारिस की वो खिंची हुई है, वो नहीं बख्शते, इसलिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि लैक ऑफ प्लानिंग यहाँ नजर आ रही है, लैक ऑफ एक्सिक्यूशन भी नजर आ रहा है लाहौर की जानिब से। जैसे एक मरतबा फिर फील्ड में तब्दीली, लॉन्ग लेग की जाने फील्डर लेने का फैसला किया है। दोनों अब ऑन साइड पे आ जाएंगे और रीजन खाली छोड़ा है हारिस के लिए अपने ओवर की आखिरी डिलीवरी करने के लिए। पावर प्ले का स्कोर हो या फिर स्टेडियम में सबसे बड़ा पेशावर, दोनों रिकॉर्ड्स को तोड़ने के करीब। एक और महंगा ओवर मुकम्मल, 52 बिना किसी नुकसान के पेशावर। For a reason. 42 of 20. Haris, Farhan alongside him. He's just starting to let loose. 9 of 4. He hit a beautiful 6 in the previous over. Well, look at the score. 4 overs, 52 for none. Shah Faisal. That's why they are the best team in this tournament. Absolutely. Haris getting off the blocks rapidly. And he's threatening to go out of sight inside that power play. Unless Hunain does something spectacular. He's all capable to do that. 11 games, 13 wickets. He's having a wonderful season. And his team badly need him to remove one of these two, preferably Haris. Yeah, he's the best thing that has happened to Lahore Blues in this tournament. He's got a job to do. Need to break this partnership. Good start to him. At this young age, let's talk about Hunain. The way he has developed as a good fast bowler is somebody who's got good brains, good head on his shoulders, is quick, good run-up. He's a complete fast bowler, Faisal. Do you agree? Yeah, his development has been phenomenal over the past 12 months. Remember, we saw him on the sidelines of the first class season last year, working hard, always there in the training sessions, listening to what the coaches had to say. And this year, he's at the forefront of the attack of Lahore Blues. Good bouncer. Superb start by Hunain. You expect that. That is a good competition. Attacking batter against a positive and quick fast bowler. Two exceptionally talented young cricketers against each other. That's the beauty of this contest. It was taken very, very short, though. Haris, it was a marginal call. I thought it was pretty high, but Hunain got away with it. But Haris, you know that he's not going to take a back seat. He's had a look for a couple of deliveries. Something's going to give. Also, he's bowling from the end with the boundaries on the shorter side. So he has to be spot on with his line and length. But the good part is he's got Umaid Asif alongside him. And the captain on the other hand, Hussain Talat. That's how he's performed throughout this tournament. 3 wickets in the first. 3 again against Karachi Whites. One wicket against Karachi Whites again. So you see he's performed. He's getting wickets. And he's getting better and better day by day. Outside the off stump, there is protection. They planned well. It's just about executing it. Because the boundary on the onside to Haris is way too short for his capabilities, for his potential. Yeah, that's the line of the attack. I think Hunain will prefer. And Sabzada Farhan himself has only had 4 deliveries. So Haris has had most of the strike. But Sabzada has got 9 of 4, so it's not that he's struggling or anything. That makes the task of the bowlers pretty difficult. Farhan now trying to be just like Haris. But we know Haris is a different sort of a batter. Farhan is more of a technically correct batter. Somebody who's more of a long format batter. If you look at the field there, Ali,
Mid-off is up in the ring on the offside. There's two fielders in front of square on the offside. Extra cover and cover. But the deep fielder is backward point. Right on the fence. Short third is inside the ring. So bowling that outside the off-stump channel is also not free of risk. Such is the difficulty for the bowlers in the power play. Oh, wow. Wow, that is all the way. Sabzada Farhan coming into action now. There is no stopping these two. Oh, he's absolutely nailed it. Hunayan was trying to bowl that slow delivery, keep it outside the off stump. But you'll see Sabzada Farhan walked right across his stumps. Mid-on was up in the ring. He just get hold of it. Look at that sweet sound of the bat. It almost hit the fence beyond the boundary line, about 20 yards away from that. That was a big hit, Ali. How do you survive as a bowler? We got Haris on one end, Sabzada Farhan on the other end, in a mood to go big. Oh, there's a chance. There is definitely a chance. There is a fielder underneath, and he takes it. Gladly, it's Imran Butt. Makes no mistake. He's the safest in the house. Sabzada Farhan will have to go back. Yeah, that short boundary was too tempting for Sabzada Farhan. Once again, he wanted to hit it towards mid-wicket. Probably close the face of the bat too soon. No issues here at the far end. But Sabzada Farhan just looking to hit it too hard in doing so. Close the face too early. And Imran Butt judged it beautifully. Never easy in the bright sunny days, the white ball. But he spotted it nicely to send Sabzada Farhan back for 15. Peshawar after a whirlwind start are now 59 for 1. We haven't seen him for a while. Israrullah was not in the side in Quaid-e-Azam Trophy nor in Pakistan Cup. We're seeing him for the first time because this is such a huge side, Peshawar, that you need to be really good to get into that side. He definitely is. He's got that experience too. And now he's got the opportunity to, Faisal. Got to make use of it. You talk about Peshawar's strength and depth. Israrullah doesn't get a chance very often. Probably this is not his best format. We know he's prolific in first-class cricket. 1,221 runs, that average of 18 and a strike rate of 114. He's a better player than that. But talk about Israrullah, talk about Sajid Khan, the test player. He can't get into their playing 11. He's playing a T20 game after 15 months, Israrullah, so definitely pressure will be on him. Another positive for Lahore Blues was Nisar Ahmed in the last game when they played here. Bowled beautifully. Took Karachi Whites by surprise. Got 3 wickets in that game. 10 wickets in his career. And once again, he's got a job to do. He's got to put the brake on the run scoring. Get the wickets also. Good to see the captain alongside him, Hussain Talat, making sure they got their fielders right. D point wasn't boundary, but he's been brought in to the regular point position. And long on and deep square leg are on the boundary line for Haris. Not quite timing it. Not quite timing it. The idea was right, gave himself room. What was that? That throw went about 5 yards behind the wicketkeeper. Luckily, Kashif Bhatti got around quickly enough. That was comical. Yeah, that's how Sabzada Farhan lost his wicket. Wanted to go towards onside. Again, looking for that shorter side of the boundary, edging it. And luckily, there was Imran Butt underneath. Change of pace. Good bowling. Very good bowling by Nisar. Good start, that is. Into the pitch. Slower in pace. That's the order of the day, probably. Especially after power play.
Nisar has got that whippy action, very deceptive. On that occasion, Haris went through the shot way too early. Obviously, he didn't pick it up off the hand, and neither off the pitch. Just hit him on the rib cage. He'll be all right. This is a good contest. Nisar is experienced. Don't say it again. Well, we should not build any player up, because the minute we do that, they just let us down, or let themselves down, I guess. Yeah, because Haris is in such a great position and his intent is pretty clear, that puts an added pressure to the bowler. Where he should be looking to ball, which area, which line, which length, all of these things going on in a bowler's head. That's pressure. And the reputation of Haris. Long on and deep square leg are the two deep fielders. We're in the power play still. That's good bowling. Good comeback. After the wide delivery, following up with a bouncer. You got to mix it up. If you put pressure, want to put pressure on Haris, you can't be predictable. Indeed, but he's shown his cards too soon in the over. Now Haris knows that he cannot bowl another short pitch delivery. That was one for the over. Line was tight as well, a bit marginal. I think umpire was a bit lenient. But he did deceive Haris though. They got to be. It's a tough thing to be a T20 bowler with 65-meter boundary. He's picked up nicely towards square leg all the way again. He'll find a way to hit a six. Haris, we know what he's capable of. When you bowl that bouncer earlier in the over, you let the batter know that the only thing coming up is now fuller length. And Haris, you see, he preempted that. He walked right across his stumps. It was slow delivery. It gave him all the time in the world to pick his spot. And that was another huge six. I mean, it's not just landing outside the fence. It's landing like 20 yards out away from the boundary fence. And this is the longer part of the boundary. And he cleared it with some ease. 181 the strike rate for Haris. He's on 49. Beautiful delivery. Good comeback. Kept low from Nisar. Yeah, sometimes you wonder, probably the bowlers overthink things too much. He's bowled all his variations. He went for runs, and now he came back to the one where he should have started. Haris preempting once again. That's been his only criticism, if you want to have any of him. He just preempts a little bit too much. He's a better player than that. He can pick the length up if he just wait for the release of the ball. There is no run there. 6 overs gone. 66 for 1. Six overs done and dusted. Belongs to Peshawar. 66 they have scored, losing just 1 wicket. The power play clearly belonged to Peshawar. 11 runs per over the average in that power play. 66 is a decent enough power play to give them the platform, and plenty of more firepower to come as well in the form of Iftikhar, Adil Amin, you name them. And Faisal, this is the 4th time they've scored about 50 runs in power play. That is the main reason they've been dominating every team, because they get such a great start from these two batters, Sabzada Farhan and Haris. Asrarullah for the first time. Oh, there is a chance, there's a chance, there's a chance. Direct hit was needed. Oh, wow. There was a little collision. Haris and Hunain, and Haris was probably expecting the fielder not to throw because he was impeded in coming back. But the throw didn't hit the stumps anyway, so no dramas. It could have been a controversial moment if that had hit the stumps, because then Haris would have had to go back. Yes, Asrarullah was not in a mood. Called no very quickly. Yeah, direct throw would definitely been gone. Hussain Thalat, the fielder. Well, look at that. There was a collision with the bowler. Yeah, direct throw definitely would have seen curtains for him.
Lahore Blues do need some luck on their way. After that, before that comical instance, I was just wondering, so Israr hadn't played a single delivery, and since we're out of power play, is immediately 5 fielders on the boundary line, just the 4 inside the ring. And that is something that Hussain Thalit could do better, because he's allowed Israrullah to get off strike and brought Haris back on strike. Same field for 2 batters, one is batting on 49 and one hasn't faced a delivery. Don't really make sense, does it? Absolutely. Haris is on 49 of just 29 deliveries. What a start. What a player. Oh, that's gone for a 6. Surely that's gone all the way. That's 50 for him. 8 for Haris. Fearless, flawless, fabulous Haris. Wow. This boy has an X factor about him. Crowd's appreciating, but he was ready and waiting. He had so much time. And absolutely smashed it. Look at that. It was above his shoulder. Sometimes this height is difficult to control. But what a clean connection that was. Richly deserves the applause. Well played, Haris. What do you do as a fast bowler? You got 65-meter boundary and you have to bowl to Haris, who's probably the cleanest hitter in Pakistan at the moment. His approach, his intent, pretty clear. 55 of 30 deliveries. You call him fabulous, fearless, flawless, but he is very intelligent and he knows it all like Google. So that's the man for him. What a talent he is. You would happily pay and watch Haris bat all day long. I would. Anyone would. When he's on song, there's no better hitter than him in Pakistan. Just need to carry on. Has been the trouble with him. He just loses it once he gets the start. I think that is where he needs to work on, just to carry on the inning and get a big one. Because as long as he stays, the runs keep coming. That's the quality Haris has in him. Don't praise him too much, because the minute we do that, people have gotten out, and they've done exactly opposite to what we tell about them. Yeah, fabulous Haris. He's been brilliant. Starting off from the delivery 1, hitting all the way. That side, all the way against the spin, with the spin, everywhere. You see the shots everywhere, all around the ground too. He's been just flawless. Even the luck has been on side, and that shorter side, he's capitalized on it and played a fantastic inning. Superb Haris. Guess what? He's yet to come. If you think getting Farhan out will ease up things, you're wrong, my friend. They've got plenty of hitters. They've got Iftikhar Ahmed, Adil Amin, Nabi Gul. They all are brilliant, and so is he. Well, it's a gorgeous afternoon. The sun is out, and then you win the toss, and you put the opposition in. Talk about some moisture. Did you see any moisture, Ali? I didn't. Hussain Thalit did. Maybe underneath. I just can't see underneath, whatever it is. On the power play. It's continued and is still continuing.
Very selfless, Mohammad Haris. Unensha. All is sorted. The ball is back. Ball him! Beautiful delivery. You needed a delivery like that to get rid of Haris. And that expressions, the celebrations, says it all. Well, the commentator curse has struck again. And this time the victim is Haris. After getting his 50 in a spectacular manner, he's lost his wicket. And that man Hunan again for his side. He's really been the go-to man for Hussain Talat this time, knocking over Haris's middle stump with a sensational yorker. Something special was needed to remove Haris, and this man has come up with that. That is classic T20 cricket. Haris gone for a blazing 55, 73 for 2 Peshawar. Don't get easy because if the car is in, I'm talking to Lahore Blue guys. But what a delivery. As you said, it needed a delivery like that to get rid of Haris. The late swing. 4,556 runs for Iftikhar. Amazing strike rate, 229. He's got 100 at this level. 31 50s. He's got talent. He's got the skill. Good time for Lahore Blues to come back into the game. That phase of over number 7 to 15. If you got 2 new batters, you can really tighten the screws. Hussain Talat doing the right thing, getting a slip in. An extra man in the ring could also help. Hunan is bowling beautifully. He needs all the support he can get from his skipper. Slip in. Good delivery. Good delivery. Iftikhar is off the mark with that single. Oh, what a delivery. Faisal, we have to see it again and again. You can do it. Tailing in, late swing. It was a pre-planned shot. Not the wise decision to come out down the track, but nothing taking away from Hunan's abilities. Yeah, that initial line of the delivery, Haris had lined him up. He was beaten by that movement, very late movement. Because the way he came out, he had lined up the original line of the delivery, but the inward movement late went under his bat. Superb bowling. Had to be. Yeah, slip in for Israrullah. Surely Hunan has made Lahore Blues made a comeback in this game, getting 2 wickets. This is a good period now. They should capitalize on it, Lahore Blues. 7 overs gone, 74 for 2. Iftikhar Ahmed is on that list of most T20 runs since 2021. Sabzada Farhan is leading that. Ahmed Shahzad in the mix as well. Abdul Wahid Bangalzai, that's a surprise, but he's a good young batter. So is Tayyib Tahir. Not many will be surprised to see Sharjeel up there in that list. Just amazing to see Sabzada Farhan topping the list. 1,000 runs, 90,095 since 2021. He's almost at the top in every format. He was the best batter in Qaid-e-Azam Trophy, Pakistan Cup, doing it in T20. It's just a fantastic performer. Could see some spin. Qasim Akram, another very talented cricketer. He's not having the best of seasons. It's a good time to bowl also. 2 new batters in, 1 a left-hander. You can just sneak in few overs, Lahore Blues, because this man
will be needed too. Usman Qadar, he bowled beautifully in the previous game. It just was one over that Azam Khan hit him for a few runs. Otherwise, he bowled an exceptional spell in that game. Would you also like to question that Hussain could have brought Usman Qadir in first? We all know that Iftikhar is susceptible against wrist spin, especially earlier in his innings. But then to bring in your batting all-rounder to bowl first, how do you see that, Ali? Well, the only thing that I can think of is that from Qasim Akram's end, the boundary is just 65 meters, and there's a left-hander on strike. You don't want to be putting your leg spinner, who's your ace bowler, into pressure early on. So maybe just securing him, giving him this end, might help. And then the batter, the right-hander, will be hitting to the short boundary. So not getting anywhere from that. I mean, Yeah, maybe he might not be bowling from the other end too. Maybe from the same end or the other end. We'll have to see. Once Israrullah gets out, maybe the tactics will change. At the moment, it's a good period. Last 6 to 7 deliveries have gone Lahore Blues' way. definitely. Wickets will be the key as well. If they continue to pick up the wickets, they could reduce the scoring rate. I'll have to wait for umpire signal. Runs given. I thought it's come off the pad. Qasim lucky to get away with that, firing down the leg side. Good start to Qasim Akram's spell. Just 3 runs coming, 77 for 2. Nisar to bowl his second over, and this is the man causing trouble to other night to the Karachi batters with the whip in his wrist. And let's see how Peshawar boys play him. It's been a good start. Yes, they've lost 2 wickets, but the score is way ahead and what it would be expected out of a team like Peshawar. 9.5 and over. Looking to set a good total out there. And in the process of getting 9.5 and over, even if you lose 2 wickets, the captain would be fine with it. In hindsight, it's actually good that Iftikhar lost the toss and his side can actually go out there and bat first. That's pretty much okay to test yourself. How are you batting first and setting a target, setting a total? And they've done a brilliant job. But there will be a time, I tell you that, in this Super 8 that they will be tested. And they should be before they reach any semi-final stage or final stage. That would be the knockout one. This time pushed through mid-wicket will be an easy couple, and Peshawar know how to build on. Very rarely does one see them faltering when they get to a situation like this where they have gotten off to a flyer. They will be sensible, and being sensible is not the anchor. It has to be played according to the situation.
And Israr and Iftikhar both are very, very experienced batters. What the 80 for 2 in 8 overs or 8.4 overs has done is put Hussain and his team on the back foot, to put them on the defense. One man in the circle on the onside, spread out onside field, 3 men patrolling the boundary. I mean, he's using the off circle to the maximum. After the power play, he's just spread everything out and have the regulation 4 inside. It's a good angle. Nisar is bowling round the wicket to the left-hander. He's not giving him any space to play his shots freely through the offside. That's the angle in line we're talking about. Just a single to end the over. It's 81 for 2 after 9. When you talk about good sides and sides like Peshawar who are not faltering anywhere, that's the last ball of the previous over, good Yorker length and well played. Then as an opposition, how do you tackle them is probably do man-to-man marking. Do homework against certain players who are doing well. Exactly what Australia did in the final. Worked a plan out, how to stop the run flow, what are the weak areas, what are the strengths and not to bowl there. And that was exactly what was well done by them with the ball. They were able to work their way around to lift the trophy. Exactly. Iftikhar Ahmed and his scores on the screen is twice or thrice not out in the tournament, carrying his team over the line. And coming back to your point, after this delivery, Sikandar. And this one, the feet have been used, but it will go straight down the throat of the fielder. Umayyad Asif there, making no mistake. And another wicket goes. A shot which wasn't required. And Lahore are now back in the game. 3 for 81. Check of the front foot, which is perfectly fine, and again that sense at times doesn't seem to prevail at all. Just the first ball of the bowler, and 2 wickets have fallen in quick succession, and then you try to play a shot which is high risk. It would have been understandable had he gone towards extra cover or straight over the head of the bowler, but he just went straight at the fielder, hoping to clear him. Gone after scoring 5 of 11 balls. Well, coming back to your point, Sikandar, and this is the wicket again on your screens. Israrullah wanting to go over long off and not able to time it to get it past the fielder, in the process losing his wicket. And now is the time for some strike rotation, maybe for a couple of overs before any one of these two starts to go big. And coming back to the point where if a team is as good as Peshawar or having their all boxes ticked, then definitely as an opposition you have to do more rights. You have to surprise them. And you have to come up with a plan where you can
block their strengths for a bit and then test their temperament, what happens, which we saw in the World Cup final with the field placings and with the line and length and the fielding that Australia put up. It was all brilliant. So what happened was, Sikandar, that in all the aspects of the game, Australia did more right than India on that day. So it is about doing more things right on a particular day. It doesn't matter who the opposition is. If two batters can get decent runs and two bowlers bowl wicket-taking deliveries and the rest can block the run flow, then it can change the complexion of a game. So it's just about doing more right things. 10 overs gone, 84 for 3. And this is the last ball. And now we go. Just placing it towards the leg side with his wrists. If on a new ball, take a couple of slips and you believe, because the captain says at the toss that there is a bit of moisture in the pitch. So if we can see a couple of slips, then do you think that is it necessary every time to have a third man? Let the batter try with the angle bat and there might lie your chances of picking up a wicket. But there hasn't been any sort of innovation in field settings, in the mindset, a different plan for a bowler. It's all been like copy-pasting most of the teams. No, I totally agree. Instead of going and following conventional field positions, like yesterday, Sajjad was going hard at the fast bowlers, trying to swing his bat, and every time he was not connecting. His edges were going down to very fine third position and boundaries. Why have a wide third man or a slip cordon when the ball is flying over? Have someone standing very straight deep, even if it's not a catch, you stop the run flow. But that wasn't the case. Yes, captaincy is much about instinctive thinking, thinking on the toes, what now, what next, you visualize. And we don't see much innovation. It's more of a regulation stuff that is going on most of the time. Oh, there's chance, but, well, they've decided and aborted on that single in just good time. Speak of the World Cup, and it just reminds me of a recent statement from Rohit Sharma, looking ahead to the World Cup, T20 World Cup coming up in June. He says that there is no role for anchors in T20 cricket anymore. And that's how he's going to be selecting his squad. Well, it's how you look at the context of his statement. Definitely, you can't play like an anchor. No team requires an anchor for a T20 game unless you have clear deficiency in your batting order. So a team like India, where all guns blazing till number 6, everybody has the potential to get 100 or to play a match-winning knock, you won't need an anchor. But if it is 2 wickets down for no run, or 3 for 10, or 4 for 12, then somebody needs to do the sensible part for a few overs. And that is not called anchor. That is adaptability to the situation. 88 for 3 after 11. But isn't that really resource dependent? What kind of side you are? Like you just mentioned, top 6 have the capability of scoring big runs and fast and quick runs. There are certain sides who don't have that many resources, and it's just one of the words that you said is resource. Every plan, every strategy is resource dependent. What the team comprises of. We hear a lot about baseball, but they bat down to number 10. And a team with only 5 good batters cannot play baseball. They have to also consider if they have match-winning bowlers, like Australia have 3 world-class fast bowlers, and Zampa in good form, they don't require 250 to beat other sides in a T20 game. And we saw that in the World Cup, that those fast bowlers made difference on so many occasions. Usman Qadir into the attack. He's bowled well in the previous outing. He's chosen to bowl from that far end, University Road end. Oh, that is a beautiful delivery. Leg spinners would love to watch that again and again. Well, Usman does bowl
few balls in his spell which are unplayable and classic leg spinners, and that is what we see missing in most of the spinners these days. But this one, he has just pushed it faster, a flipper, and that's why he is pitched it short as well. So that is where bowler also needs to be patient. If you can bowl a ball like that 3 or 4 times in the over, the leg spinner that he bowled, you can let the batsman make mistakes, because it's not easy to hard hit those kind of deliveries which spin that sharply and off a good length. I remember back in the day, late Shane Warne, I think he met Yasir Shah, one of the Pakistan leg spinners, and all he said was, I feel that there's a sense of hurry in these youngsters. Get to the top of your mark, look around, and then get in there, see how the batter is in his stance, and then bowl. Maybe, I mean, each one to his own, maybe sometimes you feel that in that hurry, you bowl a good one that's high in the air and will cross. No, that's gone. The flight has worked, the invitation has worked, and a tall man, Umaid Asif, in that position has also worked. And that is a good catch and a good time for Lahore Blues. They're trying to make their way back into the game. A perfect front foot, and that would be another wicket. And Peshawar are just starting to collapse now. It is 4 down and we are still under 100, 91 to be precise. And again a stroke which seems really senseless. There is no point going after a bowler straight at a fielder who is placed at the boundary. There are so many gaps, it's a huge field. And now 2 batters have opted to go just with the 6 in their mind, not a single gap. And that is not good game awareness, that is not what good batters do. And that is why Iftikhar was upset. If he can have those visuals once he was caught, Iftikhar was not happy with Nabi Gul. Adil Amin is the new man, and he has been among the runs. He's been scoring matches that have been outside this stadium. He has been scoring runs, and very experienced. 78 games, averages 27 with a strike rate of 113 and 350s to his credit, and has a vast experience of all 3 forms of the game. Oh, that's a good ball. That's a wrong one. It's been given. Some exaggerated turn now. Peshawar is staring down the barrel. Well, once again, leg spinners aren't they match winners, Sikandar. This is the first over, and we have seen already 2 jaffers. One beat the batter, and this one spinning the other way, and the batter had no clue. It was his first delivery, and first up this wrong one. And it spun a long way, and he wasn't sure which way the ball was going to go. So Usman Qadir has got his team in the front now. Lahore, after a pathetic start with the ball, are now ruling the game at the moment. 91 for 5 Peshawar. The under-21 player, Abbas Ali, comes in with the side facing a bit of a bother at the moment, and it's a 91 for 5. The over was completed, so Usman Qadir, when he comes back into the attack, he'll be on a hat-trick. How things have changed. They were 59 for 1, 73 for 2, and then 81 for 3, 91 for 4, and 91 for 5. Kashif Bhatti. What Kashif can now do is build that pressure up from his end and allow Usman to get those wickets, or vice versa. Marina joins us for the next 4 overs with a
a bit of a battle going on out there. Iftikhar now will be interesting to see, Maria, how he speaks of a certain brand of cricket that his side believes in, and he gives that freedom to his batters to go out there and express yourself in T20. Now they'll have to actually play a different role, play the remaining 7 overs after this and make a good score. He's experienced enough to understand the situation where they stand in. Some reconciliation is needed now. They still have to stay positive. I mean, keep rotating the strike. They can at times target Kashif Bhatti. Now what he has to do is don't worry about the wickets. Here's the man who can worry all about it. Wrist spinners, always the trump card. That was the first one, easy catch, and then that was a brilliant delivery. The length on which he pitched was exceptional. Never picked up the wrong one. Now the Lameen went back quickly. So now they have to create a partnership, Kashif Bhatti and Usman Qadir. He's been hit for runs, Kashif. 35. He's got last ball of the quota of his 4 overs. So first 3 overs went for runs. This is a better one. Just 2 of it. Make that 3. He's done with his quota of 4. None for 36. It's 94 for 5. Now he needs to revisit his plans, but they are visiting the Tapalti moment. It's a sunny afternoon here. Good contest going on in the middle. Quality cricket, quality tea. Usman Qadir on a hat-trick. And man on strike is the captain, Iftikhar Ahmed. Ideally, he would have wanted a Bass, the youngster, but nevertheless, here we go. The hat-trick ball. Flights hit and has been driven through covers. Probably come back for 2. But the youngster says no to the captain. A touch fuller, I might say. It was a good ploy, just drifting it. But the fuller allowed Iftikhar. To just deal with it. Slip in place now. That's a good ploy. Attacking. That's what Lahore Blue needs. With leg spinner on. He's got good rhythm. He's targeting the right areas, getting the results. Again, pushing for the second. How the game changes in the last 6 overs. They've scored 20 runs and lost 3 wickets. Suddenly that power play onslaught, which was 66 for 1, has changed and nosedived in the favour of Lahore Blues. Now what Lahore needs to do ideally is to bowl tight lines and make sure that they don't let this initiative slip away. Because once they get to 167 or 168, again the story changes. So they've got to keep their focus on. Don't allow easy runs to Peshawar anymore. And if they can get Iftikhar somewhere around in a couple of overs, then game on. Again pushing hard. This occasion, yes, they will pick up a couple. Just a fumble allowed it. And I always say that you don't need to obviously take the power play in contention, because it's not always dictating the outcome or the other quota of overs. To have a look at that, off the back foot, placing it to perfection, and then picked up a couple. Just overran it on that occasion.
Let's have a look at the onside field. You were talking about you're happy seeing Hussain Talat attacking, got a slip in position. Now the slip is not there, but look at that onside field. There's nobody in front of the square. And they've taken a couple of runs over here. Why allow them to rotate strike? Block the singles, force them to play those big shots. They're 5 down. Look at that again. Just push on the onside and the rotating strike. Yeah, that's where the captain mind has to stand out, because that's all required by Peshawar right now. Just keep on rotating strike, and Lahore has allowed that. 99 for 5 after 14. Okay. These are the wickets that have fallen, 5 of them. Saib Zadafaran was the first one, then a good fast Yorker length to Haris. This is where the run show was stemmed. Israr was the third one. Nabigul played it to Umaid Asif long off. And a brilliant wrong on from Usman Qadir. That's how the wickets have fallen with the scores. He's played it high on the longer side of the boundary. Trouble, trouble, and gone. This is a huge wicket at this stage. 15 of 21. The captain, Iftikhar, has taken the man in the deep. And they've lost the 6. Irresponsible shot. That wasn't needed. What was needed was just to buy time. No worries there. He's way behind that line. Umaid Asif has been decent today in fielding as well as bowling. Have a look at that. Just hitting the deck hard. Was in no position to play that shot. Never in control, and good catch by Rizwan. That's a big, big blow. Lahore will take it, but Peshawar are now dragging themselves out. Iftikhar gone on 15, 99 for 6. New batter Azam Khan, left-hander. His 7th game for him. .99 for 6. Marina, they've lost 6 wickets for 40 runs. 59 for 1 and 99 for 6. You give credit to some good tight lines and good bowling after being hit so much in the power play. This is the wicket. Iftikhar didn't get hold of it, and he's got 3 men on the onside boundary. He's got more elevation than distance really on that shot. It's so important that the Lahore Blues don't lose focus, because if they allow them to get near to 150, then they lose the whole initiative of grabbing 6 wickets inside 100 runs. That should be 100 with that single. It's all about learning to close the game. Don't let them bat 20 overs. From a batting point of view, I think Peshawar batters need to realize that what Haris and Saibzada achieved in the power play, it's gone now.
You have your own momentum, you have your own ballers to target. You cannot continue playing one-directional cricket. Obviously, you've lost wickets, you need to refocus, recalculate, and then obviously think about what total you want to post. But it's not necessary that you can carry the momentum from first ball till the end. Just looking at the score, 101 for 6 for Peshawar versus Lahore Blues. Marina, they have struggled earlier as well versus Karachi Blues, Peshawar. In the power play, they scored 55 for no loss. And then from over number 7 to 18, they scored 46 and they were all out. So Peshawar has behaved like Titanic. No. You see that 40 runs. That's how they've lost 6 wickets in that span. So I was just saying some good lines from the bowlers, but at the same time, some very careless stroke play from Peshawar batters. Apart from the 2 wickets that Usman took. Really good bowling. I think what Peshawar has done is trying to imitate what Sahibzada, Farhan, and especially Haris did. And they need to find their own zone. 15 gone, 102 for 6. Actually, let me add Hunain's wicket in that as well. Good Yorker. So 3 of them, in fact 2 of them, that Googly and that Yorker, were good deliveries to any batter. The rest of them have been caught in the deep, trying to get those maximums going. This is the bowling. So you can see where Kashif Bhatti was taken to the cleaners. He gave 3 runs in his 4th over, so he's been hit for 33 in 3. And Umaid Asif went for runs as well inside the circle. After that, how they've pulled the game back. Nasir has been good. Started bowling round the wicket to the left-handers, cramping them up for space, and that's what created that pressure. And when Usman Qadir was brought into the attack, they thought, let's attack him and get back with that rhythm, but they couldn't and handed him back-to-back wickets. It's a good change, Qasim Akram to be brought in. Don't allow them pace, spread the field out. Now it's interesting to see 2 dot balls. If you can bowl a couple more, how does the batter react? Does he try to big hit? No, almost around covers. That'll be a boundary. You see that urgency starts building inside you as a batter. I've played 2-3 dot balls. Let me try. Yeah, even at the previous delivery, he tried to hit it really hard. This time chipped it over, just enough. Good placement though, to earn the boundary. Boundary after 53 deliveries, that's 9 overs. Four dots and a boundary, last ball. Pushes it wide. Oh, gone through. Now, that's a bit of Lahore blue there for you. Slipped over the ball. 16 gone. It's 108 for 6. He's back. Usman Qadir has been brilliant, grabbing 2 wickets. That's not what's required. Again, trying to hit hard. He slipped. Never covered the line of the ball.
You can give him some cushion, but you need really good fielding in T20 formats. सनी थोड़ा या दायरे पे हुई थोड़ा या देखदा नहीं बस उस्मान कादिर ने आज शानदार बॉलिंग की है कॉन्टैक्ट्स में इस गेम के और एक मरतबा फिर गेंद को हवा में उठा दिया। उमैद आसिफ के आज सेफ हैंड्स रहे हैं, लेकिन उनसे पहले गेंद गिर गई। 2 कैच जैसे पहले पकड़ चुके हैं। उस्मान कादिर भी टर्न करने से नहीं चूक रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर उनको जो अपने आप को दरियाफ्त करने का मौका मिला इनफरादी तौर पर, उसको देखना है कि फिनिश कैसे कर पाते हैं। बेहतरीन मौका है ये लाहौर ब्लूज को पकड़ने के लिए पेशावर को। अच्छा रिदम आज उस्मान कादिर की जानिब से, अच्छे एरिया में बॉल किए। फिर गेंद हवा में गई और ड्राइव लगा के इसको कैच करने की कोशिश करेंगे हुनैन, लेकिन नहीं पहुंच पाए। पूरी कोशिश की थी, शायद अगर जल्द एंटिसिपेट करते, टेक ऑफ जल्द करते तो ये लैंडिंग वक्त पे हो सकती थी। एक और मौका निकाला उस्मान ने। जी आज शानदार स्पेल रहा है, ये गुगली थी, स्वीप करना चाहते थे, अच्छा बाउंस पे मिला क्योंकि अच्छे एरिया में बॉल कर रहे हैं उस्मान कादिर। बहुत अरसे के बाद उस्मान का ऐसा रिदम देखा है हमने, बहुत शानदार। पूरे ही T20 में अगर आप देखें जितने भी मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की है, शानदार लाइन और लेंथ, अच्छा कंट्रोल, ब्रेव बॉलिंग कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं और स्पिन भी कर रहे हैं। और यही क्वालिटी एक लेग स्पिनर में चाहिए, दिलेर होना चाहिए, और वो उस्मान कादिर हैं। और एक और दिलेर प्लेयर हैं साजिद खान, इनको मौका नहीं मिला लेकिन ये इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा, ये बाहर से ही टीम को जिताते हैं। ऑल्दो लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो उनके साथ उनको कोच कर रहे हैं, लेकिन साजिद खान की इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगी। ये बहुत ही शानदार क्रिकेटर हैं, टीम में हो ना हो ये टीम में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये लगता है सारा कुछ आज ही बता देंगे, इनको कोई रोके, वरना अगर इस तरह के शॉट खेलने के लिए जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हासिल करने की कोशिश है, लेकिन ये रिस्क बहुत बड़ा लिया था। बाउंड्री लाइन पे मौजूद थे काशिफ भट्टी, जो कि लगा के कुछ लम्हात में गेंद को खो गए थे मुखालिफ सिंध में सूरज में, लेकिन उन्होंने वहीं पर अपने आप को जमाए रखा, खैमा जन हुए और एक और विकेट हासिल की। बहुत ही शानदार बॉलिंग उस्मान की जारी है। अब छोटी बाउंड्री का बेनिफिट उठाना चाहते थे बैटर, लेकिन जो रिदम और जो लाइन आज उस्मान की है, ये बहुत ही मुश्किल होना था शॉट, क्योंकि स्पिन मिल रहा है उस्मान को, और जब उस्मान अपने रिदम में हो, इनसे बेहतर लेग स्पिनर नहीं है कोई, और आज दिखाते हुए क्यों ये बेहतरीन स्पिनर हैं। काशिफ भट्टी ने आसानी से कैच लिया है, और मुश्किल होता है जब आप छोटी बाउंड्री की तरफ इस तरह बॉलिंग कर रहे हो, हवा देना मुश्किल होता है, लेकिन उस्मान ने आज दिलेराना तरीके से बॉल किया है, बेहतरीन बॉलिंग। अब्बास अली सिर्फ 6 गेंदों के मेहमान साबित हो सके और पेशावर एंटी क्लाइमेक्स का शिकार 110 पे 7। ऐसा लगा कि आप मोटरवे पे चढ़े हो पेशावर से लाहौर जाने के लिए और उसके बाद कहीं साइड रोड पे चले गए हो। 66 पे 1 थे ये 6 ओवर के बाद, और उसके बाद अगर आपने अभी अपने इस मैच को दोबारा फॉलो करना शुरू किया है तो एक एब्सोल्यूट डिजास्टर है पेशावर के फैंस के लिए। नियाज खान नौजवान आने वाले बैटर हैं, कुछ देर में फास्ट बॉलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अपनी बड़ी हिट्स का जादू जगाना होगा। कीमती रन चाहिए जाते जाते समेटने को, लेकिन उस्मान कादिर का एक और कामयाब ओवर मुकम्मल। ड्रीम बॉलिंग फिगर्स लेग स्पिनर के 110 पे 7। कमाल का स्पेल किया है, और जब उस्मान अपने रिदम में हो तो इनसे बेहतर कोई लेग स्पिनर नहीं है। आज ये दिखा रहे हैं, अच्छे एरिया में बॉल कर रहे हैं, विकेट्स भी हासिल कर रहे हैं, और लेग स्पिनर को जब विकेट्स हासिल करना शुरू हो जाए वो तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। और ये छोटी बाउंड्री थी, इसी का चांस लिया था, लेकिन एलिवेशन नहीं मिली क्योंकि अच्छी लाइन पे गिरा हुआ ये बॉल था। काशिफ भट्टी का अच्छा कैच, बेहतरीन बॉलिंग है ये, अच्छा स्पेल। टॉस में आपका बड़ा जबरदस्त मुकालमा हुआ इफ्तिखार कप्तान साहब से, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि वो देख के भी बताते हैं, बल्कि खेल के बताते हैं। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट उसी पे उन्होंने कंटिन्यू करने की कोशिश की थी, उसी के वो खड्डे में लगता है कि जाके गिर गए, जहां पर उन्होंने इब्तिदा अच्छी हासिल कर रही थी, वो दरमियान में शायद कंसोलिडेट कर सकते थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टोटल की जानिब जा रहे थे, और अभी ये भी लग रहा है कि शायद उनकी बैटिंग अचानक से, जहां पर इफ्तिखार आउट होते हैं उसके बाद कुछ कमी आ जाती है। आदिल अमीन आए थे उसके बाद, लेकिन वहां पर उसके बाद से फिर दरारें हैं। और अखिल, मुझे तो उन्होंने टॉस पे डांट सा दिया था कि आप देख नहीं रहे हैं, और मैंने कुछ और पूछा था।
ऊंचा खेलने के लिए गए, फील्डर के बीच में जाके गेंद लैंड कर जाएगी। दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं लेकिन मयसर नहीं आ सकेगा। वो आपको डांट लगी, ये कुछ जो बड़े होते हैं उनके बात करने का अपना एक शफकत वाला तरीका होता है, आप उसको उसी अंदाज से लें। जी बिल्कुल उसी अंदाज से लिया गया मैंने। अच्छा शॉट खेलने की कोशिश थी लेकिन ये बड़ी बाउंड्री है, इस पे यहाँ पे क्लियर करने के लिए बहुत जान चाहिए आपको। ऑल्दो विद द स्पिन खेलने गए थे नियाज। कासिम अकरम का आखिरी ओवर। और वैसे भी अगर आप उनकी उस मजाहिया बात को संजीदगी से भी लें तो वो आपकी बात की तायद ही कर रहे थे कि हम खेल रहे हैं और आपको क्या दिख नहीं रहा, तो उससे ज्यादा हम कितना कर सकते हैं। लेकिन आज लगता है कि लाहौर ब्लूज की टीम ने अपने विंटर ब्लूज को खत्म किया। स्टैंड एंड डिलीवर, ऊंचा उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन फिर गेंद नो मैन एरिया में लैंड करेगी। अखिल मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया है, इफ्तिखार उम्र में भी बड़े हैं तो लिहाज भी है, बिल्कुल वो कह सकते हैं जो भी वो कहना चाहें, लेकिन अच्छा लगा कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो तो वो डेफिनेटली करते हैं। लेकिन आप कभी कभार माइंड कर लिया करें, मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र है कि कराची में आप आए, हर बात पे अगर हाँ करेंगे तो फिर बात दूर तक निकल जाएगी। इनकी इनिंग्स दूर तक नहीं निकल रही, पूरा पड़ा हुआ है। शॉट सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। हारिस के आउट होने के बाद प्लेटफॉर्म मिल गया था। ऑफ द बैक फुट, लंबा रास्ता दिया और पूरा फायर पावर मौजूद था इस शॉट में। नियाज लंबे छक्के लगाने की शोहरत रखते हैं और उसके शाया निशान पहला लॉन्च किया 119 पे साथ, जहां लेंथ मिल गया था और इसी लेंथ की ताक में रहते हैं बैटर्स आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेटर्स। देखिए स्विंग ऑफ द बैट, ज्यादा फुटवर्क नहीं था लेकिन स्विंग इतना शानदार था, पूरी जान लगी है। ये एरिया में जब भी आप खेलेंगे तो पूरी फोर्स लगती है आपकी बॉडी की, इसलिए ये शॉट इतनी दूर तक गया है। खराब बॉल था ये, यही ट्रीटमेंट डिजर्व करता था ये बॉल। और अब देखना होगा उस्मान कादिर किस अंदाज से इनिंग्स को फिनिश करते हैं। चेहरे पे बला का सुकून और संजीदगी है लेकिन अंदर क्या तलातुम बरपा है आज इफ्तिखार के जहन में। उनकी टीम ने सुपर 8 में अब तक कोई मैच नहीं आ रहा है, सिर्फ एक मैच से पहले शिकस्त खाई थी। फिर पिछले कदम से उठाने की कोशिश की और फिर गेंद लो मैन एरिया में लैंड करेगी। दूसरे रन के लिए वापस कीमती रन समेट रहे हैं जो कि आइडियल टारगेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स भी शायद अच्छी बॉलिंग करते करते चूक रहे हैं अपनी लेंथ पहली। एक और गुगली थी उस्मान कादिर की जानिब से, मिक्सअप कर रहे हैं। कभी कभी लगता है बहुत ज्यादा वैरायटी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी। अगर आप ये नॉर्मल अपनी लेग स्पिन पे भी करें और जितना लेग स्पिन इनको मिलता है उससे भी बहुत मुश्किलात डाल सकते हैं बैटर्स के लिए। यस, कुछ हरारत चाहिए पेशावर को। इफ्तिखार क्या सोच रहे हैं इसका पता नहीं, लेकिन इनकी टीम के फास्ट बॉलर्स को वैसी ही एनर्जी चाहिए होगी जैसी टपाल टी पी के हासिल होती है। धूप अपने आखिरी लेग्स पे है, इतवार का दिन, लेट बैक आफ्टरनून शहर कराची में। ये शानदार लेग स्पिन है, यही बॉलिंग करते रहना होगा क्योंकि इनके अंदर बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है और अब कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। और जब आप एक बॉलर इस तरह का स्पिन करता हो, ये अच्छे एरिया पे गिरा हुआ बॉल था, दूर बॉल किया है। एक बार फिर शायद गुगली खेलने गए थे। वंस अगेन छोटी बाउंड्री की तरफ उठाकर खेलने की कोशिश की, उमैद ने कैच मुकम्मल कर लिया। उनके साथ मौजूद थे रिजवान हुसैन जिन्होंने इस कीमती कैच को मुकम्मल किया है और हाथ खोलने का मौका नहीं दिया आखिरी लम्हात में। हालांकि गेंद शॉट थी, बाउंड्री भी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसको क्लियर न कर सके। जहां खराब शॉट्स खेलने का सिलसिला जारी है, ऐसा लगा शायद थोड़े रिलक्टेंट है, थोड़े इजी हो गए पेशावर की साइड। इतनी डोमिनेशन दिखाई है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस विकेट के साथ ही उस्मान कादिर ने 4 विकेट्स हासिल कर ली। क्या शानदार स्पेल है। एक बार फिर छोटी बाउंड्री को क्लियर करने की कोशिश, फोर्स नहीं क्योंकि ये बॉल बैटर से बाहर की तरफ जा रहा था। और आसान सा कैच रिजवान हुसैन की जानिब से। न्याज इंप्रेस नहीं कर पाए, 7 रन बनाकर वापस जाना होगा 122 पे 8। नौजवान इलियास आने वाले बैट्समैन जिनको अपनी इन डिपर्स और इन स्विंगिंग डिलीवरीज के जरिए से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा बॉलिंग की इब्तिदा में। लेकिन उससे पहले नजरों का मरकज है रेड किट में चमकते हुए आज उस्मान कादिर।
इलियास जो कि अब खास एक्सपीरियंस रखते हैं जवान उम्री में, चाहे PSL हो, नेशनल T20 या फिर दीगर फॉर्मेट्स, हर तरफ उन्होंने कोशिश की है। डायरेक्ट एज पे गिरते पड़ते रोका। शानदार बॉलिंग उस्मान कादिर की, तीसरी मरतबा 4 फॉर हासिल किया। शानदार बॉलिंग, आसान सा क्या चाहिए। आज अलग लेवल पे नजर आए उस्मान। आज जैसे इनसे एक्सपेक्टेशंस है वैसी ही बॉलिंग की है, क्योंकि इनसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के बेहतरीन लेग स्पिनर हैं, ये तो मानना होगा। और गेंद एक मरतबा फिर हवा में, क्या अपनी 5वीं विकेट हासिल कर लेंगे? यस, करियर बेस्ट बॉलिंग की है, इमरान के हाथों में खेल दिया। उस्मान कादिर ने कोटे की आखिरी गेंद पर भी जाते जाते एक और विकेट हासिल कर ली। क्या शाम है उस्मान कादिर की, 100 विकेट्स भी मुकम्मल की T20 में और अपनी टीम के लिए 5 आउट कर दिए। बहुत ही लाजवाब से पहले ये क्या कहने उस्मान कादिर की, आज तो रिदम ही बहुत अच्छा था, अच्छे एरिया में बॉल गिरा है, कॉन्फिडेंस मिलता चला गया विकेट्स के साथ साथ, और कुछ मदद भी मिली खराब शॉट से पेशावर के बैटर्स की जानिब से। बड़े शॉट्स खेलने गए और विकेट्स गवाते चले गए। एक बार फिर बड़ी बाउंड्री को क्लियर करने गए थे, कोशिश की थी आजम ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 14 रन बनाकर वापस 123 पे 9। चमक रहे हैं कराची की धूप में उस्मान कादिर, 5 विकेट्स हासिल की, 12 डॉट डिलीवरीज और अपने T20 करियर की 100 विकेट्स में मुकम्मल की। जिस टैलेंट से भरपूर हैं उसके शान शान आज बॉल डालने में कामयाब रहे, और साथ साथ कुछ पेशावर के बैट्समैन की जल्दी भी थी, लेकिन उस्मान कादिर दोनों हाथों से ग्रैब करेंगे। लेग स्पिनर एक अटैकिंग ऑप्शन होता है जो कि दरमियान में चूकता भी है, लेकिन आज उन्होंने थ्रू एंड थ्रू अपने 4 ओवर, हालांकि बड़ी देर से आए थे गेंद करने के लिए, लेकिन आज से मुकम्मल किए और अब 9 में से 5 आउट कर चुके हैं। इमरान खान सीनियर आने वाले खिलाड़ी हैं जो कि आज टीम का हिस्सा भी बने हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल चाहिए होगा पेशावर को अपने सुपर 8 के विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए, और दूसरी जानिब से इस इनिंग्स को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आए हुनैन। यार अकील, लाहौर ब्लूज को एक ऐसी परफॉर्मेंस की जरूरत थी, और उस्मान कादिर के स्पेल के बाद बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा पूरी टीम को ही। शासिर पे एक खिलाड़ी आउट हुआ था पेशावर का, और उस वक्त ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी उड़ान की जानिब जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक के बाद एक करके उनके ओपनर्स के बाद तो फिर इफ्तिखार का इनका एलिमेंट भी काम ना आ सका। हालांकि पिच में अब तक वो कोई ऐसे डेमन्स मौजूद नहीं है जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, बाउंड्री भी मुनासिब है, लेकिन साथ साथ आज लाहौर ब्लूज की टीम ने, जिनकी बॉलिंग आर्गुएबली एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट समझी जाएगी इनके बैटिंग के मुकाबले में, उसने अपना काम कर दिया। ये काफी सीरियस चेहरे हैं यहाँ पे पेशावर के डगआउट में, लेकिन आप ब्रांडेड क्रिकेट जब खेलते हैं जैसा इफ्तिखार कहते हैं तो ऐसा होता है। शॉर्ट बॉल मिल गई, लेकिन इसको भी खेलने में कामयाब रहे इलियास। एक चपा खाने के बाद शिद्दत से जरूरत वाले चौके के लिए चली गई, खूब पिक किया इलियास ने। जहाँ गैप अच्छा तलाश किया, इलियास में पोटेंशियल है बड़ी हिट्स खेलने की, ये मारते हैं। लास्ट ईयर नेशनल T20 में बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी इन्होंने, और कई मैचेस अपनी बैटिंग से जितवाए थे इन्होंने। यहाँ पे बॉल भी मिल गया इनके आंखों के सामने, फुल स्विंग, प्लेसमेंट भी शानदार रही और रिजल्ट भी। यस, गो के बहुत ज़्यादा शायद डिफरेंस क्रिएट ना कर सकें, लेकिन जो इनका खासा है जो कि उन्होंने स्टेडियम में किया भी है हुनैन ने, यॉर्कर करके उनको इनिंग्स को ख़त्म करने की जानिब सोचना चाहिए कि मोमेंटम माने रखता है एक फिजिक्स के सब्जेक्ट में और क्रिकेट के खेल में, और साथ साथ लाहौर ब्लूज तो वैसे भी अपनी बैटिंग के हवाले से क्वेश्चन मार्क हैं उन पे। यस, हाई ब्लॉक होल में ये बेहतर एरिया है, क्योंकि टेल एंडर को अगर आप लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो वो स्विंग करने का मौका होता है उनके पास, लेकिन अगर आगे बॉल करेंगे तो उनको थोड़ी एलिवेशन चाहिए होगी, इसीलिए टेल एंडर्स को आगे बॉल करना, यॉर्कर करना या वेरिएशन के साथ बॉल करना ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है, रादर देन कि आप पुराना पीछे बॉल करें, लेंथ बॉल करें, क्योंकि उसमें वो एलिवेशन हासिल होती है टेल एंडर्स को। लेकिन यहाँ पे अच्छा कमबैक किया चौका खाने के बाद हुनैन ने। Yes, Ilyas 2.0 arrived in Karachi. एक चपा खाने के बाद बाउंड्री लाइन की जानिब रवाना, कीमती चौके पेशावर और इलियास के लिए।
यहाँ इसी टैलेंट का मैं जिक्र कर रहा था कि इनके अंदर बैटिंग का टैलेंट है और यहाँ पे इनोवेट करते हुए बॉलर के साथ खेलते हुए थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया तो उन्हें आगे ही बॉल करने के लिए इनफैक्ट इतना आगे नहीं था बॉल, थोड़ा दूर ही था बॉल, लेकिन अच्छे तरीके से कनेक्ट किया इलियास ने। ग्रेट इम्प्रोवाइजेशन कहेंगे इलियास की जानिब से। फील्ड का जायजा ले रहे हैं ऑन साइड पर, कीमती चौके हासिल कर चुके हैं। इनिंग्स की 2 गेंदा ने बाकी, 130 जो दीवाने का ख्वाब लग रहा था एक मौके पर, उसके बियॉन्ड ऑलरेडी जा चुके हैं। इंटरेस्टिंग होगा कि क्या और यॉर्कर अटेम्प्ट करेंगे। पूरा रूम बनाकर खेलना चाहते थे, कीमती एक और रन हासिल होगा। टॉप क्वालिटी क्रिकेट दोनों टीम्स के माबैन। ये बेहतर है, यॉर्कर इस पेस पे मुश्किलात डालता है टेल एंडर्स के लिए। ऑल्दो इलियास ने टेल एंडर्स जैसी बैटिंग नहीं की है, उससे बेहतर बैटिंग की है, लेकिन आते 10वें नंबर पे हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमें टेल एंडर कहना होगा इनको। और अब इमरान सीनियर देखते हैं आखिरी बॉल पे क्या कर पाते हैं, क्या वो मोमेंटम दिला पाते हैं एक बाउंड्री हासिल करके अपनी टीम को। आसान नहीं होगा क्योंकि हुनैन शाह बहुत ही अच्छे रिदम में अच्छी बॉलिंग करते हुए। ये भी आमतौर पर टेल एंडर्स की जगह फाइन लेग या स्क्वायर लेग के ऊपर बड़े शॉट्स लगाने के लिए शोहरत रखते हैं। वॉच आउट फॉर अ बिग वन। आखिरी बॉल आने को, फुल टॉस हासिल हो गई और सिर्फ एक रन पे इक्तफा करना पड़ेगा। नो, वापस आ रहे दूसरे के लिए और इस पर रन आउट हो जाएंगे, लेकिन अपने 20 ओवर मुकम्मल खेलने में कामयाब रही है पेशावर की टीम और इसके साथ उन्होंने कुछ ना कुछ स्कोर बोर्ड पर जरूर डाला है, जो कि एक मौके पर लगता था कि शायद आज 200 भी मुकम्मल कर जाएंगे, बल्कि स्टेडियम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे रन्स बनाने का, अपना ही बनाया हुआ। और कहाँ एंटी क्लाइमेक्स और अपनी डगर से हटे और बिलो पार टोटल हासिल किया। बेहतरीन मौका लाहौर ब्लूज के लिए अपनी पहली फतह हासिल करने का सुपर 8 में। जहाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये बेहतरीन मौका है लाहौर ब्लूज के लिए कि यहाँ पे जीत हासिल की जाए। अकील 66 रन बनाए थे पावर प्ले में, 1 विकेट गवा के, लेकिन उसके बाद 133 पर ऑल आउट हो गए। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए कैप्टन, क्योंकि इतने अच्छे आगाज के बाद जो शॉट सिलेक्शन हमें बैटर्स की जानिब से देखने को मिली वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थी। ऐसा लगा सारे ही बैटर्स बहुत जल्दी में है, बड़े हिट मारना चाहना चाहते हैं, लेकिन क्रेडिट देना होगा उस्मान कादर को, जिस ब्रेवरी से, जिस दिलेरपने से उन्होंने बॉलिंग की। और ये आखिरी आउट होने वाले बैटर दूसरे रन के लिए भागना ही था, लेकिन अच्छी फील्डिंग आज एक्शन में नजर आए। फील्डिंग की बदौलत उमैद आसिफ 2 कैचेस भी पकड़े, रन आउट भी किया, और शायद उस्मान कादिर की एक परफॉर्मेंस ऐसी है जो कि लिफ्ट कर सकती है लाहौर ब्लूज को, जो कि काफी डाउन एंड आउट रहे हैं नेशनल T20 में, और ये एक लकी चार्म हो सकता है उस्मान कादिर अपनी टीम के लिए। उस्मान, ज़बरदस्त बॉलिंग, बहुत ही क्रूशल स्पेल था। आपने ना सिर्फ 5 विकेटें हासिल की बल्कि अपनी 100 विकेटें भी इस लेवल पे पूरी की। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बताएं कि जिस तरह का मोमेंटम अपोजिशन ने हासिल किया था, आपके प्लान्स पे वो कितना रिफ्लेक्ट करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, 100 विकेट्स और फर्स्ट 5 फॉर इन T20s। वेल जिस तरह हारिस और साहबजादा खेल रहे थे तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जिस तरह की विकेट है 200 प्लस कर जाएंगे, बट मैं अपने जो मेरे नर्व से मैंने उसको कंट्रोल रखा हुआ था। मैंने कहा जब मेरी बॉलिंग आएगी तो मेरी बस यही कोशिश होगी कि इनको डॉट बॉल्स करूं। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक मेरी बॉलिंग है वो आउट हो गए हुए थे, तो मैंने अपने प्लान्स पे स्टिक रहा और अल्लाह पाक ने इज्जत भी दी। आपकी बॉलिंग में वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो ऑब्वियसली सरफेस और अपोजिशन के हिसाब से होती है या आपकी स्ट्रेंथ उसको कंसिडर करते हैं?
मेरी स्ट्रेंथ भी है और मैं हर बैट्समैन को देख के बॉलिंग करता हूँ कि कौन सा बैट्समैन कहाँ पे स्ट्रांग है और कोशिश करता हूँ कि उसके जोन में उसको बॉलिंग ना करूँ। तो मेरे ख्याल से कि कुछ अरसे में जो 6-8 महीने जो पीछे गुजरे मैंने उस पर काफ़ी वर्कआउट भी किया अपनी बॉलिंग पे और मैंने मेहनत भी बहुत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी आ रहा है। एज ए स्पिनर इतना इम्पैक्ट बनाया, थोड़ा सा सरफेस के बारे में बताएं, क्या फील हुआ, कैसी है? आई थिंक सरफेस जो है उस पर स्लो है सरफेस है, और मेरे ख्याल से कि आप जितना जो है स्लो बॉल करने की कोशिश करेंगे उतनी आपको कामयाबी मिलेगी इस पर। चलें, कॉन्ग्रेचुलेशन, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट्स आपको हासिल हो। वेल इंशाल्लाह, डन। थैंक यू वेरी मच। उठाने वाले पहले खिलाड़ी थे, हुनैन ने उनकी विकेट हासिल किया और उसके बाद उन्होंने धूम मचा दी। आते ही उन्होंने ये बैक टू बैक 2 विकेट दिलवाई और उसके बाद उमैद आसिफ इन एक्शन आए जिन्होंने कैच पकड़ने के सिलसिले की शुरुआत की। पहले इसरारुल्लाह आउट होने वाले खिलाड़ी थे जो कि अपने कदम जमाना चाह रहे थे और उसके बाद एक मरतबा फिर ऊंचा खेलना चाहते थे। फिर उस्मान कादिर इन एक्शन आए, बैक टू बैक उन्होंने अपने 4 ओवर्स भी किए और उस दौरान उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की। उमैद आसिफ को अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपने जौहर दिखाने का मौका मिला, अपने बॉलिंग में अपने तजर्बे का इस्तेमाल किया और ऊपर तले चाहे आदिल अमीन हो जिनसे तवक्का थी, अब्बास अली या फिर इसके बाद आने वाले आजम खान, वो कोई बड़ी इनिंग्स ना खेल पाए। सिर्फ एक न्याज थे जिन्होंने आने के बाद छक्का लॉन्च किया और वो भी अपनी इनिंग्स को वो लॉन्जेविटी ना दे सके जो कि एक डिसेंट टोटल की जानिब लेकर जाती और बिलो पार टोटल हासिल कर पाए। यूं ये वो अच्छी फील्डिंग थी जो कि सम अप करने में कामयाब रही इस इनिंग्स को और आखिरी गेंद पर तमाम खिलाड़ी इनके रन आउट हो गए। वापस के आखिरी खिलाड़ी की सूरत में 134 का बज़ाहिर आसान नजर आने वाला टारगेट है लाहौर ब्लूज को सुपर 8 के मरहले में अपनी पहली फतह हासिल करने के लिए कराची में, जिस चेज के साथ कुछ देर में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम से।
अंपायर्स मैदान में जा चुके हैं, पेशावर की टीम भी मैदान में जा चुकी है इफ्तिखार अहमद की क़यादत में। और ये लाहौर ब्लूज के दोनों ओपनर्स इमरान भट्ट और रिजवान हुसैन, और बहुत ही एक अजीबोगरीब सी इनिंग्स थी पेशावर की। प्लेटफॉर्म उनका सेट था, पावर प्ले में 66 रन पर एक ही खिलाड़ी आउट था, लेकिन फिर इनिंग्स कोलैप्स हुई जिस बुरे तरीके से, विकेट के ऊपर विकेट गिरती रही। और अब लाहौर ब्लूज के पास एक अच्छा मौका है कि टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट जो टीम है उनको अपसेट शिकस्त दे सकें। स्टार्ट इंपॉर्टेंट होगा, तजर्बेकार इमरान भट्ट और रिजवान हुसैन। 54 हाईएस्ट है इमरान भट्ट का। 23 मैचेस उन्होंने इस फॉर्मेट में खेले हैं, 21 की एवरेज है और 114 का स्ट्राइक रेट है। दाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन और उनके साथ राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। रिजवान हुसैन 22 की उनकी एवरेज है और ज्यादा प्रोलिफिक हैं। इमरान खान सीनियर को एक मौका मिला है इस टूर्नामेंट में, अभी तक बेंच ही गरमाते रहे हैं। 89 मैचेस, 99 विकेट्स, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और नए बॉल से अच्छी बॉलिंग कराते हैं, बॉल को स्विंग कराने का हुनर रखते हैं। 134 का टारगेट है 20 ओवर्स में। खुश आमदीद कहेंगे सलमान भट्ट को, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन। शुक्रिया शाहजी। इमरान खान के ओपनिंग स्पेल पे बहुत डिपेंड करेगा कि पेशावर किस तरफ लेके जाता है इस पावर प्ले को, क्योंकि ये मैच विकेट्स के बगैर नहीं जीता जाएगा। पेशावर की फील्डिंग तो अच्छी ही रहेगी, इस दफा ज्यादा रन्स नहीं है उनके पास। जो बैटिंग इनिंग्स थी उसके बारे में जितना पेशावर कम सोचे उतना बेहतर, क्योंकि लेट डाउन किया उन्होंने अपने आप को। अब क्यों सोचना, जब सोचने का वक्त था तब तो उन्होंने सोचा नहीं कि इस इनिंग्स के साथ करना क्या है। इतने अच्छे स्टार्ट के बाद जिस तरह बगैर सोचे समझे उन्होंने शॉट्स मारे और कह लें क्लूलेस एट टाइम्स जो उनकी शॉट सिलेक्शन थी, तो जाहिर है फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो यही हैं कि आप जल्दी आउट हुए। शॉट इमरान भट्ट, शॉर्ट पिच देखी और एकदम से टूट पड़े उस पर। क्या लाजवाब आगाज है, जबरदस्त आवाज आई बल्ले से जैसे ये गेंद टकराई। बहुत ही शानदार पुल शॉट। और इमरान खान जो हैं ये जाने जाते हैं इस बात के लिए कि ये वार्म अप होने में बहुत वक्त लेते हैं। और यहाँ पर एक शॉर्ट पिच बॉल थी जो कि मॉडरेट पेस पे थी और उसको बहुत ही शानदार तरीके से पुल किया है इमरान भट्ट ने, एक फ्लैट छक्का मारा। और अब वहाँ पर फील्डर को पोस्ट कर दिया गया है, फाइन लेग ऊपर आ गई है और स्क्वायर लेग जो है वो डीप बाउंड्री पर है। बिल्कुल स्कर्टिंग के ऊपर जाकर टकराई ऑन द फुल, इसलिए 6 रन का इशारा। एतमाद आया होगा इमरान भट्ट को इस शॉट के बाद। 36 पर 7 आउट हुए थे लाहौर ब्लूज के पिछले मैच जो यहां खेला गया था। फिर अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, टिपिकल वाइट बॉल शॉट था, थर्ड मैन की जानिब खेलना चाहते थे इमरान, एंगल बल्ले से बीट हो गए। वाइड ऑफ द क्रीज इस बॉल को किया और बॉल पड़ने के बाद सीधा रहा, अपनी लाइन को होल्ड किया। इमरान भट्ट इसको थर्ड की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन बच गए हैं। अगर आउटसाइड एज हो सकता था इस बॉल पर, नए बॉल पे ही एक हाई परसेंटेज स्ट्रोक नहीं है। जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट एक मिल गया है, मॉडर्न डे बैटर्स कोशिश करते हैं, इंटेंट इज द नेम ऑफ द गेम। ऑल्दो सलमान, इंटेंट की डिस्क्रिप्शन करनी बहुत ज़रूरी है। इंटेंट सिर्फ यही नहीं है कि आप रन्स चलाते रहें, इंटेंट सिचुएशन को असेस करके उसको प्लान करना पॉजिटिवली, ये भी इंटेंट ही है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और जब तक आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली उसको डील नहीं करते और आप उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली नहीं बनाते, तो
सिर्फ अगर हिट मारने का ही इंटेंट है तो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है वो डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में। बैट बॉल, खराब बॉलिंग थी, पूरा मौका मिल गया इमरान बट को, और इमरान खान अपनी इस गेंद से खुश नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल एक फ्री भी थी, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई। यहाँ इस बार शॉर्ट बॉल और बहुत ही ये ख़राब डायरेक्शन थी इसकी, और इमरान बट ने इसकी सिर्फ मदद की इसको बाउंड्री की तरफ भेजने में, और शॉर्ट फाइन के फील्डर से दूर। अच्छा बॉल एक किया इन्होंने, अवे स्विंग इन्हें मिला, बॉल को बीट किया, रिपीट नहीं कर पाए अपने उस बॉल को, और उसके बाद हमने देखा कि 2 शॉर्ट पिच बॉलों पे 2 बाउंड्रीज कंसीड कर चुके हैं ये। अच्छे एरिया पे अभी भी नई बॉल से मदद थी इमरान के लिए। ये बॉल थोड़ा सा नीचे रहा, लेकिन अच्छा आगाज है ये लाहौर ब्लूज का, 1 के बाद 10 बगैर किसी नुकसान के। आपने वो उस्मान की विकेट्स दिखाएंगे? सर लेग स्टंप देखेंगे क्या वन? उसका स्पेल दिखा दीजिए, हाईलाइट। सर मिडल भी देखिएगा, सेक्शन मिडल। कोई भी कैमरा पकड़ सकता है। बढ़िया आजमाइश में पेशावर की टीम ने अपने आप को डाला, इतनी डिजमल बैटिंग परफॉर्मेंस देकर। और दोनों ही बॉलर ऐसे हैं जिनको पहली दफ़ा यहाँ खेलने का मौका मिला है इस साल नेशनल T20 में। इलियास काफ़ी होनहार क्रिकेटर हैं, 59 मैचेस में 61 विकेट। इकॉनमी कुछ ज़्यादा है, लेकिन ये पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं और डेथ में भी। बॉल तो 2 की है। थोड़ी सी हिचकिचाहट इमरान ने दिखाई, लेकिन रिजवान ने डेंजर एंड पे आना था, इसलिए वो पहुंच गए। एक गैप में स्ट्रोक था और आसान 2 रन्स थे। जब आपका टोटल बड़ा लिमिटेड हो और उसमें आप सिवाय विकेट्स लेने के कोई रास्ता ना हो जीतने का, तो फिर बॉलर्स की लाइन और लेंथ बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। और ऐसे में अभी तक हमने जो देखा है कि 7 बॉल्स का खेल हुआ है, जिसमें अराउंड 4 बॉल्स ऑफ लाइन हुए हैं, जिसमें 2 बाउंड्रीज लगी हैं और 1-2 दफ़ा बचत भी हुई है। ये वो चीज़ है जिसमें फिर बॉलर्स को बड़ी परफेक्शन के साथ जो है अपना ऑपरेट करना पड़ता है, और अपनी फील्डिंग के मुताबिक उन्हें कंसिस्टेंटली बॉलिंग करनी पड़ती है। ये दोनों एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में अच्छी बॉलिंग कर चुके, मोहम्मद इलियास जो हैं ये 6 से 7 एडिशन PSL के खेल चुके, और डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, तो खासा एक्सपीरियंस नज़र आता है आपको पेशावर की बॉलिंग लाइन में। कि डेफिनेटली जो इनका टोटल है उसमें इनके लिए रेगुलर विकेट्स पिक करना बहुत ज़रूरी होगी अच्छी फाइट पुट अप करने के लिए। एरियल शॉट, लेकिन ये गैप में जाएगी और 4 रन मिल जाएंगे। गेंद वहां गई नहीं जहां रिजवान खेलना चाहते थे, लेकिन नतीजे से खुश होंगे। यही तो मसला है कि हम नतीजे से बहुत खुश होते हैं, और प्रोसेस जो है उसके ऊपर एट टाइम्स हमारा वो वैल्यू नहीं देते हम जो देनी चाहिए। नतीजे की खुशी बड़ी दूर ले जाके पता चलता है कि ये तो नतीजे की खुशी थी। लेकिन सलमान, अक्सर ये भी कहा जाता है, इस फॉर्मेट में तो नहीं, टेस्ट मैचेस में ये बड़ी मशहूर कहावत है, मैं इस बॉल के बाद उसका जिक्र करूंगा आपसे, और आप खुद भी ओपनिंग बैटर रहे हैं, वो आपसे पर्टिनेंट होगी, इस पर आपके ख्यालात जानूंगा। लेकिन फील्ड में कोई तब्दीली हुई नहीं, 1 स्लिप और 3 फील्डर्स ऑफ साइड पर। कोई आइडिया नहीं था रिजवान को कि कहां बॉल गई, लेकिन अच्छी कॉल थी इमरान बट की। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अभी एक रन लिया दोनों बैटर्स ने, थोड़ी टेक्निकल बात है क्रिकेट के बारे में कि इमरान बट इतने सीनियर प्रो हैं और कैप्टन भी रहे हैं पूरा सीजन इस टूर्नामेंट से पहले तक। एक हाथ में बैट और दूसरे हाथ में 2 ग्लव्स उतार के भाग रहे हैं, इससे डेफिनेटली आपकी रनिंग स्पीड कम होती है,
और इट्स नॉट अ गुड वे ऑफ रनिंग बिटवीन विकेट्स। तो जितने भी यंगस्टर इस मैच को देख रहे हैं, ये वो चीज़ है जो करने की नहीं है फॉर एवरीवन। बाकी है कि इमरान बट अच्छी फॉर्म में शानदार स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और लाहौर के लिए ज़रूरी कि ये अच्छी और लंबी बारी लें। लाजवाब जबरदस्त स्ट्रोक इमरान बट के बल्ले से बाउंड्रीज का सिलसिला जारी है और ये सब शॉट्स में से बेहतरीन शॉट। जी, कहते हैं अगर बैटर की फॉर्म और बैलेंस चेक करना हो तो ऑन ड्राइव देखिए कैसे खेलते हैं। और ये नहायत ही शानदार स्ट्रोक था जिसको फुल फेस को प्रेजेंट किया, ऑल्दो के बॉल भी उनके जोन में था, बट स्टिल बहुत शानदार टाइमिंग और एक खूबसूरत स्ट्रोक। क्रिकेट के बेहतरीन शॉट्स में से ये शॉट है और इनकी फॉर्म की अक्कासी करता है जिस आसानी के साथ उन्होंने खेला है। जब ऑन ड्राइव इतनी खूबसूरती से एक्सिक्यूट हो तो क्या ही बात है। यहाँ गेंद को ज्यादा जोर से हिट लगाने चले गए, अपनी शेप खो बैठे, लेकिन एक और अच्छा ओवर। पहले ओवर में 10 रन आए, दूसरे में 11। लाहौर ब्लूज 21 बगैर किसी नुकसान के। इक्कीस बगैर किसी नुकसान के। और वो जो बात हमारी चल रही थी प्रोसेस की और रिजल्ट की और उस पर खुश होने की, एक कहावत है कि अ थिक आउटसाइड एज इज अ बैटर्स एन ओपनिंग बैटर्स कवर ड्राइव। वो क्या कहेंगे आप? देखिए, हर चीज की जगह और सर्कमस्टांसेस होते हैं। इट्स एन इंग्लिश सेइंग फॉर मॉइस्चर इन द पिच, ओवरकास्ट कंडीशन एंड अ ड्यूक बॉल इन हैंड। और इस बार थर्ड की तरफ खेला है। आपने थिक आउटसाइड एज का जिक्र किया और ये हमारे सामने है एक जिसको वैसे तो ये प्लेस किया है रिजवान ने, बट जो सेइंग है डेफिनेटली इंग्लैंड में आपको पता है ओपनर्स के लिए मुश्किल कंडीशंस होती हैं। ड्यूक का बॉल स्विंग करता है और बादलों के साथ चलता है, सूरज है, बादल है, तो बहुत कुछ वहाँ पर ओपनिंग बैटिंग में आपको बड़ी डिटेल्ड टेक्निकल कह लीजिए कि आपकी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हिट थ्रू द लाइन है और मज़े ही और है यहाँ पर तो। लेकिन आपको कभी इंग्लैंड में मजा आया, थिक आउटसाइड एज लगी और देखा कि वो स्लिप से दूर है तो आप खुश हो गए, बल्कि चौका भी मिल गया? आपसे पूछूंगा इस बॉल के बाद। लेकिन इस वक्त इमरान बट स्पेयर करने के मूड में नहीं है। इमरान खान जरा सा लेंथ में चूके या लाइन में, इमरान बट उन्हें पनिश कर रहे हैं हर मौके पर और एक मरतबा फिर बाउंड्री चेक होगी। लाजवाब बैटिंग इमरान बट की। इमरान बट जो है वो बस पूरे पूरे छक्के मार रहे हैं, ना 1 इंच ज्यादा ना 1 इंच कम। और इस टाइम पर तो क्या कहेंगे, फिटिंग वाले छक्के शाहजी। पूरा देखिए रोप के ऊपर जाकर लगा है। दूसरा छक्का और दोनों सेम रिजल्ट। तो बिल्कुल इतनी ही छक्के की जो लेंथ थी वो बिल्कुल स्कर्टिंग की एज पे जाके लगी। लेकिन अच्छे लग रहे हैं इमरान बट। मैं अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिल रहा बट साहब, लेकिन मैं आपको याद करवाऊंगा अगर डॉट बॉल होती है तो। यहाँ फिर चेज ऑन है और अच्छी फील्डिंग नबी गुल की। देखिए, इमरान खान जैसे सीनियर बॉलर जिनको आगे से थोड़ी बहुत मूवमेंट मिल रही है, उनके लिए हर 1-2 बॉल के बाद अगर वो शॉर्ट पिच बॉल करेंगे, और इमरान बट जिस किस्म की फॉर्म में है, जितना इजीली वो लेंथ को पिक कर रहे हैं, जिस तरह के हमने उनके शॉट्स देखे हैं, चाहे वो फ्रंट फुट पे ऑन ड्राइव हो, चाहे वो बैक फुट पे पुल करना हो, तो ऐसे में फिर आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ या एक हार्ड लेंथ के ऊपर ज़्यादा विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपनी लेंथ ढूंढ नहीं पा रहे हैं इमरान। कंसिस्टेंसी अगर हो तो आप बैटर की लाइफ मुश्किल बना सकते हैं। पावर प्ले में भी इसी चीज़ की कमी नज़र आई है यहाँ पर। और वैसे बाय द वे दूसरे ग्राउंड से जो इतलात हैं, पिंडी की टीम मैच जीत चुकी है, तो पिंडी और पेशावर 2 ऐसी टीमें लग रही थी जो टेबल टॉपर्स लग रही थी। लेकिन लगता है कि आज पेशावर की टीम जो है, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और अब बॉलिंग में आगाज़ हुआ है, शायद वो अब दूसरे नंबर पर चली जाए। पिंडी की टीम टॉप पर आ गई है इस वक्त। बाहरी किनारा
दो गेंदें अच्छे एरिया में की और ऑलमोस्ट रिजल्ट आ गया था इमरान खान, लेकिन कोई स्लिप नहीं था। जाहिर है इतने कम रन और इतनी पिटाई के बाद। देखिए शाह जी, इतने कम रन्स में ही तो स्लिप चाहिए। जब आप विकेट लिए बगैर मैच जीत ही नहीं सकते, तो ये फील्ड फैला के तो सिर्फ आप मैच को अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वो वाली बात है। जब तक आप यहाँ पे विकेट्स नहीं लेंगे, मैच का कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन वही बात है, जब इतनी पिटाई हुई इमरान की तो कप्तान का एतमाद खो बैठे। तो फिर बॉलर तब्दील करें, फील्डिंग क्यों तब्दील सिर्फ हो रही है? 5 गेंदों के बाद तो तब्दील करने से रहे। इन द एयर और आउट हो गए। साहबजादा फरहान कैच करने में कामयाब हुए और इमरान खान ने सुख का सांस लिया। 3 बॉल जगह पर शाह जी, सिर्फ 3 बॉल, और आप देख लीजिए कि रिजल्ट आया है। अगला बॉल स्विंग हो रहा था, तो इस नए बॉल को जितना आगे करते। और यहाँ पर इमरान खान का फ्रंट फुट चेक है जो कि बिल्कुल परफेक्ट, और पहली विकेट जो कि पेशावर को मिली, पहली कामयाबी। और इमरान बट ऐसे लगता है कि वो पहले से पिछले बॉल का वेट कर रहे थे। इस अगले बॉल पे वो पूरा आए नहीं, जो टांग थी बैट उससे बहुत आगे निकल गया, और इमरान बट को जाना होगा। 24 रन बनाए, अच्छे स्ट्रोक खेले, लेकिन लंबा नहीं कर सके इस इनिंग्स को। 3 ओवर के अख्ताम पर 32 पर 1। हाशिम इब्राहिम नौजवान टैलेंटेड बैटर, इस फॉर्मेट में नए हैं अभी। इसी साल फर्स्ट क्लास में भी उनका डेब्यू हुआ। हाईएस्ट 22 है। आज उनके पास मौका है कि एक लंबी बारी खेलें और इस फॉर्मेट पे भी अपनी अथॉरिटी को स्टैंप करें, टीम में अपनी जगह को पक्की करें और अपनी टीम के लिए जीत हासिल करें। इफ्तिखार आ गए बॉलिंग क्रीज पर, निकाल दिया इसे रिजवान ने। आगे गिरी हुई गेंद थी और 4 रन हासिल किए। इफ्तिखार काफी मायूस हैं और बाउंड्रीज का सिलसिला इस पावर प्ले में नहीं रुक पा रहा लाहौर ब्लूज के बल्ले से। देखिए रुकना भी नहीं चाहिए, ओवर पिच्ड बॉल था, और कह लीजिए कि ये बनता था कि इस बॉल को 4 रन मारे जाए। और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक रिजवान का ऑल अलोंग द ग्राउंड। बैटिंग की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पावर प्ले में अभी तक बहुत ज्यादा बाउंड्री बॉल्स दी हैं। कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की, अच्छी लाइन और लेंथ की, लेकिन अगर आप पैकेज देखेंगे तो तमाम ही बाउंड्री बॉल्स फ्री हिट्स थी। इस मरतबा हवा में बॉल मिड ऑन से पहले गिर गई। पोर एक्सिक्यूशन कहेंगे इससे पहले 3.5 ओवर्स में पेशावर की जानिब से। इफ्तिखार काफी तेजी से अपना ओवर कर रहे हैं, बिल्कुल बैटर को सोचने समझने का मौका नहीं दे रहे, इसलिए शायद रिजवान चांस ले रहे हैं। ये वो इमरान बट का डिसमिसल, बहुत ज्यादा हाथ उनके जिस्म से आगे की तरफ निकल गए, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहे। इफ्तिखार के पहली बाउंड्री के बाद अगले 4 बॉल अच्छी जगह पर किए और रिजवान को मौका नहीं दिया उन्होंने कि आसानी से कोई बड़ा स्ट्रोक खेल सके। ऑल्दो के रिजवान जो है वो फुल इस टाइम इस ताक में है कि उन्हें बॉल मिले उस जोन में। यहाँ पर कट किया है उन्होंने और इस बार गैप में 4 रन बनेंगे। एक सेफ और अच्छा शॉट, और इफ्तिखार ने एंटिसिपेट किया था कि ये हिट मारेंगे तो उन्होंने तेज गेंद कर दिया, जिसको रिजवान ने बड़े अच्छे तरीके से उसकी पेस का इस्तेमाल किया। 4 ओवर्स के अख्ताम पर 40 पे 1। ओवर का आगाज बाउंड्री से और इख्तिताम भी। इस मरतबा पेस को अच्छा इस्तेमाल किया, लेट खेले और एक अच्छी बाउंड्री रिजवान के लिए। छाई हुई है लाहौर ब्लूज की टीम इन इब्तदाई 4 ओवर्स में। 40 पर 1।
40 for 1 after 4. It's been a good day for Lahore Blues as Azam Khan comes in. He's a good bowler. He's impressed us all with his tight line and length. Doesn't spin much, but his line and length is immaculate. Giving it a bit air also. Very good afternoon to Sikandar Bakht. Good evening. How are you doing? Not yet an evening. 5 o'clock. Yeah, the lights are on in the stadium. Tick outside edge and is just running down to third for a boundary. Yeah, that is bound to happen. Outside the off stump, this will happen. Hashim Ibrahim has played well throughout the season. Some luck going his way also. No slip. You need to get wickets. Captains have been hesitant getting a wicket, getting a spin. This one spun, but you need to have a slip. It's a good batter. He can bat. Showed his skill in Qaid-e-Azam Trophy, Hashim Ibrahim. These are easy conditions for him, not much target to chase, 134. He can take his time. So can Rizwan Hussain. We know his capabilities, he can go big. Must be very happy, Ali, with the performance, how Lahore Blues have fought their way back into the game and against a very strong Peshawar side. And it's a good opportunity for them to score these runs in a very handsome fashion. Try not to take all the 20 overs. It's going down the leg side. 5 overs gone, 46 for 1. Right, what has happened at UBL Sports Complex? Sialkot batting first, scoring 163. Shoaib Malik, 84. That's a good news for them. Rawalpindi chasing down that score at 18.4 overs. Yasir Khan following up another great performance. Scored 100 last evening, 87 not out. 6 consecutive wins for Rawalpindi. We thought that any team can challenge Peshawar. It will be Rawalpindi. But here, Lahore Blues has done well. High in the air, catch it is a call, and he's got under it. Just said that they should be able to finish this off in handsome style. Iftikhar takes a wicket in his second over, dismissing Rizwan. Lahore lose their second. Second catch for Sabzada Farhan, but what about that shot? There's no problem here with the no ball. We don't expect that from Iftikhar. Rizwan Hussain had such a great opportunity, no pressure whatsoever, but why would you just go bizarre and lose your wicket? Good catch by Sabzada Farhan. He had an opportunity. He'll have to walk back. 17 runs. It's 46 for 2. Wicket-keeper batter, Junaid Ali, was injured in the previous game when Lahore Blues played here. Played the last game, scored 34 not out. He has got another opportunity. There is no pressure. Good strike rate, 148. Early days for him. But he's a talented wicket-keeper batter, very skillful. Another big game lined up, the second one
Lahore Whites versus Karachi Whites. If Lahore Blues win this game, this just opens up the Super 8 a little more. Because we saw Peshawar racing their way to the semis, but this defeat, if it comes about, will just open the table. That's the wicket. Iftikhar in his second over. Is it the good length that Iftikhar balls is outstretched the batter. He just got more elevation. Sahibzada Farhan taking the second catch in the match. Yeah, he swept his way, planted his left foot in the line of the ball and swung it. Yeah, that brings up the 50 for Lahore Blues. And you have square leg inside the circle. You cannot ball on the leg side. These are easy pickings. Iftikhar has been very good with his line and length. This one leg side-ish line, well picked up by young Hashim Ibrahim. The line you said, I think more than line, it's the pace that Iftikhar balls at. He varies it up, gives the air, ball slow. That's why he's successful as an off spinner. 6 overs gone, 52 for 2. Okay, I'm sorry. Well picked by you. That's all right. Power play, 52 for 2. Is it on their way? Looking to score the remaining 82 runs of 84 balls. इमरान भाई बैटिंग दे सही दे शाबाश yeah Well, they're just pushing singles around. Ali, tell us more about your domestic season. You've been on it from the Quaid-e-Azam Trophy to the Pakistan Cup and then all the games in the national T20. How has it been? Because you are the one who leads the way every season. And you must have seen quite a few players across formats that would have taken your attention. You're nodding your head. People can't see that on TV. Yeah, it's been an honor commentating in the whole season. I really thank PCB and TPT for the opportunity they give us for the 4th consecutive year. They've seen lots of talent. catch it It's in the air. There is a fielder. He takes it quite comfortably. Another wicket going down. It's Junaid. This time, the informed Junaid scored a match-winning inning in the last game, but cannot do much in this. He has to go back. Good catch by Abbas. Azam Khan getting his first wicket. Yeah, there are 76 ways of losing a game, and Lahore knows all of them. They did that in the last game. This wasn't necessary. You need a runner ball. I'm not saying don't try, but then why would you take a fielder on? You played it right down his throat. So many areas you could play a shot in. That's very ordinary on that occasion from Junaid. 1 of 4 deliveries, 53 for 3 now. Lahore surely shouldn't lose from here. They've dominated this game, but just last couple of overs, losing few wickets. And now captain walks in. Last time when Lahore Blues played here at National Bank Stadium, he played a poor shot. But here the conditions, the situation is quite easy. He can take his time. 3,137 runs, 124 the strike rate, 17 50s, the best of 80. Good middle order batter.
But he's got a responsibility. He needs to see his team home. 81 runs required of just 80 deliveries, singles. And proper cricket should do. They shouldn't be looking to get fancy, which I believe Rizwan Hussain and Junaid Ali tried to do. Yeah, it's simple. Just keep on rotating the strike. That's how you should be looking to play, especially these next 4 to 5 overs. This Junaid not very intended. Maybe was looking to go straight, just not quite placing it and timing it too. Good ball, good ball. Rashamala. 7 gone, 55 for 3. Yeah, coming back to the same point that you asked me earlier about the talent that we have seen throughout the Quaid-e-Azam Trophy, Pakistan Cup, and now National T20. They've been impressive players. They've been good fast bowlers. I was really delighted to see a few players from Dera Murad Jamali, even Bahawalpur players in National T20. They were good players. We can work on them. Early days for them, but still they should be kept in their eye, in the selector's eye, because there've been few talented players in that area. I say that because it's very important for these areas to develop cricket. And once one player gets an opportunity, it just runs through the system in that city. Other players wants to play cricket. That's what I want to see. Players coming from small towns, and this structure will give them that opportunity. That is why I like this structure, 18-team structure. I've been saying it because there's been not much cricket happening in those regions, in those small towns, because I had a feeling that people are not interested in playing club cricket anymore because they were not getting opportunities in the last structure. But with this structure, everyone is getting opportunity, and if we are able to get few players, even 1 or 2 players every year from these small towns, that will be a success for PCB and this structure. So I'm glad we're back to 18 teams. There we go. Another one bites the dust. This is just beyond me. Trying to sweep one, exposing all 3 stumps, and Iftikhar hits bullseye. 55 for 4. Has to be a legit delivery. He doesn't cross that limit. That popping crease is pretty safe. They're not learning. They're definitely not learning. Again, slow in pace. That's what Iftikhar is doing in this tournament. He's bowling according to the conditions. He knows it. He's got that experience. And he's got that control too. A poor shot by Hashim. There was no need of it. You were going fine playing in the V. Should be disappointed. 12 he scored. It's 55 for 4 now. Qasim Akram. Very talented. But he is not transforming that talent into performance. That's the problem. 64 is best, 125 the strike rate. He's better than the numbers say. Because if the car is bowling so nicely, he's kept Sajid Khan out, the test off spinner. Peshawar have got Lahore Blues exactly where they want them to be. 55 for 4 and breathing heavy. It's getting a bit of turn as well. It's just the right areas, just outside off stump. The ball pitches and comes into middle leg. 8 overs bowled. Lahore Blues are struggling. 55 for 4. Chalo, boys.
Mohammed. वही डाटा बॉलिंग को. सो मरीना, उम्मीद थी आज लाहौर ब्लूज विंटर ब्लूज से निकल आएगा इस परफॉर्मेंस के साथ, जो कि उन्होंने बॉलिंग के जरिए से इंस्पायर किया था। लेकिन एक मरतबा फिर ये बैटिंग की मुश्किलात उनके आड़े आ रही हैं। 32 रन का ओपनिंग स्टैंड हो एक ऐसे टारगेट के पीछे जिसपे आपको सिर्फ 6 रन पर ओवर की औसत से कुछ ऊपर से जाना हो, तो ये अपने आप के लिए फिर मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। मुश्किल मरहला आन पहुंचा है। हुसैन तलत को अपने गियर को चेंज करना पड़ेगा ऐसी इनिंग्स खेलने के लिए। अब तक जो टोटल इन्होंने बनाए वो मैक्सिमम 150 का था, तो बैटिंग के हवाले से इनकी वैसे भी कोई बहुत ज्यादा हम-आहंगी नहीं है। बॉलिंग ने अपना काम कर दिया था मरीना। यहाँ पर थोड़ा सा रीएवैल्यूएट करना पड़ना था लाहौर को, और कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगेन वही बात है कि शॉट सिलेक्शन और माइंडसेट की मुझे समझ नहीं आ रही। ऑल आउट जा रहे हैं, वन डायमेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, सिर्फ फोर्स करने जा रहे हैं शॉट्स को। हालांकि अगर थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करना और रोटेशन और स्ट्राइक, इतने बड़े गैप्स अवेलेबल हैं। इवन ये भी देखें, बहुत ही प्री मेडिटेटेड शॉट थी और कोई पोजीशन नहीं थी। अगर स्लोअर डिलीवरी जरूर इफ्तिखार अच्छी चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये शॉट खेलनी भी है, आप क्रॉस चले भी गए, तो स्पेशली इस शॉट के लिए आपको आगे से बॉल को पकड़ना होता है। तो एक्सिक्यूशन और प्लानिंग दोनों फेल है। यस, इंस्पायरिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस है अब तक इनके कप्तान की जानिब से। एक मरतबा फिर आकर वो फर्स्ट चेंज में आए थे। पिछला ओवर विकेट मेडन फेंका है, 3 ओवर वो कर चुके हैं। 1 मिनट के साथ 14 रन दिए हैं, 2 विकेट्स उन्होंने कमाई हैं। तलत हुसैन के ऊपर शायद कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर भी बांध के रखा हुआ है। अब तक इस ओवर में महज 1 रन वाइड का हासिल हो पाया है लाहौर ब्लूज को। और अचानक से जब इब्तिदा में इनका आस्किंग रेट था महज 6 रन पर ओवर से कुछ जायद का, वो बढ़ता हुआ 7 तक जा रहा है और 4 विकेट्स भी गंवा चुके हैं। काशिफ भट्टी को अपना जौहर दिखाना पड़ेगा। तलत ने फाइनली बड़े शॉट की कोशिश की, फील्ड वाइड स्प्रेड है और इनके ज्यादा काम नहीं आ पाएगा। लाहौर ब्लूज उस प्लानिंग के हिसाब से खेल रहा है जो पेशावर चाह रही है। सिंगल्स उन्होंने ब्लॉक किए हुए, वो चाह रहे हैं कि प्रेशर बिल्डअप हो और वो बड़ी शॉट्स खेलने जाए और वहीं पे विकेटें गंवाएं, और ऐसे ही होता आ रहा है। और इसको काउंटर करने के लिए लाहौर ब्लूज के पास कोई प्लान नहीं है। हालांकि प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए, थोड़ा सा मोमेंटम चेंज करने के लिए सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्विक सिंगल है, डीप में फील्डर मौजूद है, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहिए और मुकम्मल कर लेंगे। 59 पे 4। हरारत, ताजगी और शायद कुछ एनर्जी चाहिए लाहौर ब्लूज को, लेकिन क्राउड के लिए बेहतरीन मौका है। फ्लड लाइट्स ऑन है। सबसे जल्द वो दिन है जब सूरज ग़ुरूब होता है। कराची में अभी भी गो के इसमें 21 मिनट बाकी हैं। टपाल टी से बेहतर आपको एनर्जी देने का कोई जरिया नहीं हो सकता। बाकी के मुल्क में अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको शायद या ख़ब में रोशनी पड़ती देख के हैरानगी हो रही हो, लेकिन बाकी के ज़्यादातर शहरों के बरक्स यहाँ पर देर से सूरज ग़ुरूब ज़रूर होता है, लेकिन ये यहाँ का भी जल्द तरीन टाइम है और लाहौर ब्लूज़ के लिए मुश्किलात आन पड़ेंगे। अगर ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद आप उस मैच को जीत नहीं पाते हैं या फिर सिंगल हैंडेडली परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो फिर आगे आने के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगे। और पेशावर की स्टार स्टडी टीम है। आदिल अमीन आ गए हैं गेंद करने के लिए, ये देखते हुए कि स्पिन के खिलाफ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको भी अपने हाथ को टर्न करने का मौका मिलेगा। किया बॉल और 2 रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उस्मान कादिर ने अपने इंटरव्यू में ये जरूर मेंशन किया था कि थोड़ा सा स्लोअर साइड पे पिच रहा है, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिल रही थी। और बात यही है कि जब आपके बॉलर्स आपके बैटर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो मैसेज जरूर देते हैं कि किस तरह की पिच बिहेव कर रही है। ये रन आउट की इन्होंने ट्राई जरूर की थी, पहुंच गए हुए थे हुसैन तलत, 1 रन चुराने में कामयाब रहे। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या मैसेज लाहौर के बॉलर्स ने उनके बैटर्स को दिया था, स्पेशली उस्मान कादिर ने। उठा कर खेलने का मौका मिला, गेंद के नीचे आए हैं और गेंद जाती चली गई। खूबसूरत शॉट जिसको विद द टर्न खेलने की ठानी और खूब निकाला। इन द एंड बना सेफ और पावरफुल। बड़ी जरूरत थी ऐसे शॉट की। दिल का स्ट्रोक था ये, इनसाइड आउट। ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन है हुसैन तलत का। थोड़ा सा टॉस्ड अप डिलीवरी थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, हल्का सा रूम भी क्रिएट किया, लेकिन बहुत ही शानदार शॉट था फुल फॉलो थ्रू के साथ। इस तरह की शॉट्स अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे तो
इस टारगेट करीब जा सकेंगे। इफ्तिखार इस तरफ से गेंद कर रहे थे और वो बैट्समैन के साथ खेल भी रहे थे और अपने पेस को भी वैरी कर रहे थे। विकेट्स में उन्होंने हासिल की थी। आदिल अमीन को के एक छक्का शायद इतना माने नहीं रखेगा इस गेम के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो प्रेशर को जाने नहीं देना उनको पड़ेगा। ज़्यादा रेगुलर बॉलिंग करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में पेशावर को उनकी जानिब मुड़ के देखना नहीं पड़ा। लेकिन आज एक ऐसी परफॉर्मेंस के लिए जिसमें विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखने, एक छोटे टोटल को डिफेंड करने के लिए उनकी ज़रूरत आन पड़ी है। और कासिम अकरम के लिए भी, जो उनकी एबिलिटी पिछले 2 साल से जिसका चर्चा भी रहा, जिसमें कुछ गिरावट भी आई है, आज उसका सबूत होगा कि वो किस अंदाज से इस प्रेशर की कंडीशन में अपने आप को ढाल पाते हैं। परफॉर्म करने का मौका भी है और साथ से इम्तहान भी बनता जा रहा है। देखना ये कि दूसरे एंड से क्या कंटिन्यू करेंगे ये आजम के साथ, जिन्होंने खुद बड़ी शानदार बॉलिंग की है। 3 ओवर में 13 रन दिए हैं महज 1 विकेट के लिए। डिसेंट कमबैक 6 से कंसीड करने के बाद 69 पे 4। मरीना, आज पाकिस्तान ने पहली मर्तबा न्यूजीलैंड की टीम को T20 इंटरनेशनल में शिकस्त से 2-4 किया। एक बड़ी फतह हासिल किया, वो भी उनके अपने होम ग्राउंड डनेटन में। सो रिमार्केबल परफॉर्मेंस, एक अच्छे साइन लग रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा साइन लग रहा है। अच्छा मोमेंटम हासिल किया इन्होंने। फातिमा सना की वापसी हुई है, कमबैक मैच था उनका इंजरी से, और आते ही 3 विकेटें हासिल की उन्होंने। और उसके बाद शवाल, जो कि इमर्जिंग की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स उनके लिए भी था। वो टूर्नामेंट भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि स्ट्रगल कर रही थी अपनी फॉर्म से, और ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम है। अगर पाकिस्तान का जो आगाज़ हुआ इस टूर का, आई थिंक इसमें से काफ़ी पॉजिटिव्स आएंगे और यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये खुशाइन बात है। उठा कर खेलने के लिए गए और एक मरतबा फिर विद द टर्न खेलने का फैसला किया कासिम अकरम ने, और हाथ खोलने का मौका मिल गया अपने साथी खिलाड़ियों कप्तान से हौसला हासिल करते हुए। पहला चौका कासिम का। इसी चीज़ की ज़रूरत है, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है लाहौर ब्लूज़ को। आउटसाइड ऑफ द रूम मिला था। कासिम अकरम पूरी सलाहियत रखते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, आगे गेंद किया था। एक अच्छा दिल का स्ट्रोक इनका। सो यहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने 3-0 से T20s में शिकस्त से 2-4 किया था साउथ अफ्रीका को, और 150 तो लग रहा था कि वहाँ पर उन्होंने गोंद के साथ चिपका दिया है कि वही बनाना है और उसी को चेस करना है। लेकिन आपने नौजवान खिलाड़ियों को जिक्र किया, तो आपको जो ख़वातीन का ख़ास तौर पर क्रिकेट खेलना है, उसमें मज़ीद जिस तरह से शवाल ने परफॉर्म किया आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप बड़े इन्वॉल्व रहती हैं इसमें। बिल्कुल, हमने रिसेंटली अंडर 19 का टूर्नामेंट कराया, 6 टीमें वहाँ थी और वो बहुत ही क्वालिटी टूर्नामेंट रहा। हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिली। इमर्जिंग के ट्रायल्स हुए, इमर्जिंग का पूल बढ़ गया हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि अगला साल का आगाज़ भी हम एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट से करें, जहाँ पर यंगस्टर्स को भरपूर मौका मिले। जितनी ये क्रिकेट खेलेंगे उतना इनको एक्सपीरियंस हासिल होगा, और फिर सीनियर्स के साथ अगर ये खेलते रहेंगे और इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स जैसे इमर्जिंग की ट्राई नेशन हुई हैं, पाकिस्तान इमर्जिंग, वेस्ट इंडीज़ इमर्जिंग की बायलैटरल सीरीज़ हुई हैं, जनवरी के एंड में मोस्ट प्रॉब्ली अंडर 19 जो है वो बांग्लादेश ट्रेवल कर रही है, उनके श्रीलंका के साथ ट्राई नेशन सीरीज़ है। तो एक अच्छी प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव चीज़ें आ रही हैं वुमेन क्रिकेट के लिए, और रिजल्ट भी साथ साथ नज़र आते रहेंगे। वंडरफुल, विश देम ऑल द बेस्ट। पहला T20 अगर आप जीत लेती हैं तो फिर उसके बाद हौसला भी बुलंद हो जाते हैं, और सबसे रिमार्केबल बात यह है कि बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की है। बैटर्स ने भी परफॉर्म किया, फिर फातिमा सना ने तो शानदार कारकर्दगी दिखाई ही है। आजम के कोटे की आखिरी गेंद थी, उन्होंने अपने 4 ओवर का स्पेल तो पूरा किया है, लेकिन अपना काम किसी हद तक कर गए हैं। गेम अभी भी ऑन रखा हुआ है इस पार्टनरशिप में। 78 पे 4। थोड़ा मुस्तहकम ज़रूर हुआ है लाहौर ब्लूज़, शायकीन एंजॉय कर रहे हैं मौसम को भी, क्रिकेट को भी। और जब आप इस ग्राउंड में जाने के लिए गुजरते हैं इस जगह से, तो आपको काफ़ी आवाज़ें भी आती हैं, अपने फेवरेट स्टार्स को बुला रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और यही खुशाइन बात है जब अपने स्टार्स को अपने नज़रों के सामने खेलते देखते हैं। जितने जोशीले थे इनके लिए तो सेल्फी के करीब भी ना अपना जाएं, क्योंकि अगर उनका नहीं तो अपना मोबाइल आप ज़रूर गवा देंगे, लेकिन आप सिक्योरिटी के तौर पर मुझे ले जा सकती हैं। अगर इस अंदाज के मजीद जोश जज्बा हो, ज़रूर आइए ग्राउंड में।
इफ्तिखार वापस आगे गेंद करने के लिए और उनकी पहली ही गेंद पर उठा के खेलने की कोशिश की है, तो तजर्बा वहां से आदिल अमीन को आजमाने का उनके ख्याल के मुताबिक कारगर साबित ना हो सका। और अगर बात कर रहे हैं ग्राउंड पे आने की, तो बिल्कुल आइए, कराची और लाहौर की राइवलरी के डबल डोज है इस वीकेंड पे। कराची वाइट्स का और लाहौर वाइट्स, ऑल वाइट्स एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगी। एक एक गेम दोनों टीम्स को जीतने का, एक एक हारने का मौका मिला है। इवन स्टीवन पोजीशंस हैं दोनों टीम्स की। स्ट्रेंथ के हवाले से कराची की एक टीम क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है, लाहौर की ये दूसरी टीम है। और उसके अलावा अगर आप जो ट्रेडिशनली देखें तो जो लाहौर लायंस कहलाती थी या लाहौर वाइट सब कहलाती है, वो मुकाबला करेगी उसमें। यहाँ पर भी लो स्कोरिंग गेम, गो के आप कई मरतबा T20 क्रिकेट में मजमूई तौर पर 500-500 रन के करीब बनते हुए देख लेते हैं, लेकिन लो स्कोरिंग थ्रिलर की कोई बात ही और होती है। एक मरतबा फिर गैप में स्मार्ट क्रिकेट का मुजाहरा किया है, सॉफ्ट हैंड से खेले थे, लेकिन बहुत मुश्किल होती है दूसरे रन को लेने में, और शायद अच्छा फैसला किया कि ऐसा रिस्क नहीं लिया। अच्छी हिकमत अमली है कासिम और हुसैन तलत जो कप्तान हैं, दोनों के दरमियान बैट बॉल्स को अवेल कर रहे हैं। बाकी सिंगल और डबल्स पे कंसंट्रेट किया हुआ है और यही तरीका है इसको चेस करने का। डेराला की ये कॉल आप सुन रहे होंगे हारिस से, जबकि दूसरी जाने विकेट अभी भी चाहिए पेशावर को। अदरवाइज अगर इसी अंदाज से चलते रहे तो टारगेट के लिए ये ठीक परवाज है, 54 रन दरकार है। इफ्तिखार के 4 ओवर्स भी अपने अख्तिताम को पहुंचे, 80 पे 4। हेलो yo Rasha. Lahore Blues needed a partnership. Skipper Hussain Talat is in the middle, along with Qasim Akram, two very talented players. Lahore Blues cannot afford any more hiccups. Qasim has had a lackluster season so far. He was amongst the runs in the previous game though, which was not televised yesterday against Lahore Whites. Him and Junaid Ali. The kind of side Peshawar is, even though they have not been able to post a big total, they will fight. And they are taking the fight to the opposition. Slog and a fielder there. Yes. There you go. There you go. They won't give up and they won't give in. Wow, that's exactly what Lahore Blues didn't want. Qasim Akram, one of their more prolific batters, is gone. And now the nerves will come in for sure. Israrullah, part-time left arm spin. No issues here. Qasim Akram took the fielder on, but he didn't have to move an inch. Adil Amin, very, very safe pair of hands. And now half the side is back in the hutch for Lahore. A nervy chase as Qasim walks back. He's gone for 10. Lahore, 81 for 5.
Kashabati, now the new batter in, who scored 50 in the previous outing here at the ground. Barasha. 81 for 5, Lahore Blues. He's got experience, 76th match. He's got that 150, which I just mentioned. And gets off the mark with a single. End of the over is 82 for 5. Mr. Qasim Akram's dismissal. You see the fielder was strategically placed. It's totally unnecessary. You'd have to say that don't require a huge run rate, just 7.4. But his stay was paramount. But he's lost his wicket. Now two experienced heads in the middle. And Lahore does need some calm heads. They really have been under the pump in this Super 8, lost 2 games. And if it gets closer, you can bet that they will be the ones who will buckle under pressure, because Peshawar is a side who knows how to fight till the end. Regulation field, a third man and a deep cover out on the offside. Just opening the face, but finding the field. Still, the 52 runs that are required of 42 can get tougher if they lose Hussain Talat over here, because he's the last hope or the mainstay for Lahore Blues. Peshawar also knows that his wicket can do a world of good to their task, which is to defend this 134 scored. 133 rather. Upish, little wide of that long on fielder. He'll come around. No, he won't. Wasn't able to cut it off. 4-2 Kashabati. Didn't go where he intended, but this outfield is so fast. Just went in the gap and Azam couldn't save it. But he was looking to go straighter, but he just went over mid-wicket, which was inside the ring. He's looking more so towards mid-off. Incredible. The amount of pace it's generated out of this outfield gave the fielder no chance. Handy boundary for Kashabati. Shah, you see a certain level of plan going on in Iftikhar's mind. Niaz Khan, their fast bowler, here he is. He hasn't bowled him. So he's bowled 4 spinners. There he is. He bowled 4 spinners, 2 part-timers. And it's worked for them. So he hasn't bowled an over yet. Iftikhar being the all-rounder, he bowled, and then I was surprised when Israrullah bowled, but then he got the wicket immediately. Plenty of options there for skipper Iftikhar, and he hasn't used one of his main resources so far. That's Israr who has taken the wicket, so this option has worked for Iftikhar and Peshawar. Lahore Blues want this man to finish the job, the captain. 47 away. Looking for 2. Can they come back? Rather, oh, here they are coming back. That's well run. Made up their mind and pushed Kashabati to come back. And they picked the right man in the field. Imran is not very swift mover. But Hussain Talat, look at it. Just touched down. He was never in doubt. Ran in straight lines. Probably a bit too straight if umpire Asif Yaqub was watching. But yeah, Imran Khan Sr.,
He's not one of the swiftest movers and hasn't got a strong arm. Good cricket from Lahore. Required is 7.3, current is 6.4. Need one big over somewhere to make it a runner ball or less. And they should be patient with that over to come. Target the bowlers, find who can they score runs against. This wasn't that bad either. 8 of the over, 90 for 5. For 5, 6 overs to go. A wicket or two could really make it interesting. Great evening, and you can enjoy it with a cup of tapal tea. The tapal tea moment. That lounge has been pretty busy today. Gorgeous Sunday afternoon turning into Sunday evening now. Definitely a cup of tea is the order of the day. Well, Sikandar, you're talking about Niaz, and if the Khar has heard you, he's now at the bowling crease from the pavilion end. It's the 7th bowling option used by skipper Iftikhar. 43 of 35, and there comes the man we were talking about, Niaz Khan, into his first over. He's bowling the 15th. So that one over I'm talking about, where they need to get some runs and make it run a ball or less, could be this. Just unsettle him. Spinners have not really allowed anyone to score. What you can do is fancy your chances. Good single, almost looking to put yourself in trouble, but he's taken it. It's fair enough. Hussain Talat should keep most of the strike and try to get those runs. Wherever a loose delivery comes, try to capitalize on it. He's 20 of 22. And of course, Peshawar will be focusing only on him. Try to keep him off strike or get his wicket. This is also important, the left-hand, right-hand combination for Lahore Blues. Have to re-bowl that. This may go down to the wire. If Peshawar doesn't allow that one big over, then this might come up to a situation where they need 11 or 12 with the last over. The closer it gets, the nerve it will get for Lahore Blues. Like I said, they lost a tight one yesterday against Lahore Whites, and they were reduced to 36 for 7 in the first game, so they're low on confidence. That could have gone anywhere. Santala didn't know where it went. Looking to
dab it and drop it right in front and take a single. It's just almost bounced over the stumps. You remember Nisar did the same thing to left-handed batters, coming round the wicket, that angle into the left-hander, not allowing him to play anything through the offside. So he's just replicating that over here, Niaz Khan, and he's doing it well. Because there's no one in front of the square inside the circle on the onside. There are 3 men on the offside, and you've got to utilize them. So then it forces him to play that, and he's gone. That's what happens when the runs are not coming. He tried to improvise, and he's just handed a dolly to Imran Khan Senior. This is now trouble for Lahore, as the captain has been dismissed. Trouble indeed. What a soft dismissal that was. Niaz, who's been waiting for quite a long time, he had to wait till over number 15 to get into action. There's no problem here. And it was a slow delivery, no pace on it. And just like catching practice, Imran Khan is delighted. He must have been nervous when he saw that ball coming to him, but he held on to it. Important catch, important breakthrough by Niaz. Hussain Talat walks back for 20. Lahore Blues 93 for 6. Usman Qadir, after his heroics with the ball, is now required to do a job with the bat. 253 runs, the average of 12, it's best of 36. He's no mug with the bat. This format doesn't allow you to express your batting if you're batting at number 8 or 9. But today, he's got some time and his team badly needs him. "15 overs have been bowled. It's 93 for 6. Look at that wicket again. Hussain Talat is looking to use the pace, and there was none from Niaz. The game is really in the balance now. Like I said just a while ago, the closer it gets, Lahore Blues will get nervy. And they will feel the pressure more than Peshawar. Ilyas is back. He had 2 expensive overs at the top of the innings. But with this lower order, his extra pace can be critical. Sensible batting can get them to that 41 of 30. And with Kashif scoring a 50 in the previous game, Usman can bat too. They should take the side over that finishing line. Umad to come, who's also handy with the bat. And we saw the prowess of Hunan Shah, who hit 2 sixes at the back end of that previous game that was played here. Peshawar were 102 for 6, and look at where Lahore is, 94 for 6. Equal on wickets, behind on runs. They're really making a meal of this run chase. 134 at the halfway stage. You would have thought that Lahore were the favourites, but once again the batting is letting them down. Last 5 overs, over number 11 to 15, Lahore Blues have managed 24 runs when they've lost 2 wickets. And those 2 wickets have been Hussain Talat and Qasim Akram. 2 set batters who build a platform. They're getting out. And now Kashif
Batting on 8, Usman without scoring. Getting into the last 4 overs of a T20 game with 2 new batters and the run rate climbing at all times. It's now got up to 8.57. They'd have to do something about it pretty quickly and not lose wickets. Imran 24 of 13, Rizwan 17 of 14. Hashim, they all got in and got out. So did Hussain Talat and Qasim Akram. And when you do that in a run chase situation, no matter how modest the total is, you put your team in trouble. And they are in trouble indeed. Usman doesn't know where the next run is coming from. Nothing fancy from Iftikhar, just a regulation field. In 2 minds, Usman. First trying to duck, then try to play it. Just probably realizing when he was ducking that it's not that high, he can reach it. Look at that. He's trying to duck and leave it and then attempting to edge it, ramp it. Indecisiveness does come into your mind when the side is in trouble. You've got several thoughts that are crossing your mind while you're facing a ball. I need to finish this for my team. And now I hope Usman doesn't play a rash shot. He's played 4 balls and he hasn't got off the mark yet. Yeah, there. Swings his bat. He's lucky it goes on the first bounce. But they've taken only 1. Wow. It didn't go straight to the fielder and then he fumbled it as well. And still they only ran 1. What are you doing, Kashif Bhatti, Usman Qadir? Look at that. Look at that. Oh, this is a stroll in the park, really. That is sloppy. Hope you don't lose by 1 run. They do well to get that far, by the way things are going. Just 2 of this over. That required is now almost coming up to 10. They need that 1 big over somewhere. You don't want to be chasing 15 in the last over. Dot ball. And again, now wanting a single, Kashif has to understand that Usman is not interested. 16 gone, 95 for 6. उनतालीस रन 24 बॉलें। लाहौर ब्लूज ने अपने लिए मुश्किलात खुद से खड़ी की हैं। शॉट सिलेक्शन, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। नियाज बड़े शॉट की कोशिश है, लेकिन ये साइड लंबी साइड है, बड़ी बाउंड्री है। यहाँ पे काफी ज्यादा जान चाहिए आपको ये साइड क्लियर करने के लिए। एक मौका ऐसा आया था कि जब ऐसा लगा था कि लाहौर ब्लूज शायद आज अपनी पहली जीत हासिल करेगा, लेकिन सलमान बट ऐसा ना हो सका। देखिए, जान के साथ दिमाग का मुजाहरा भी ज़रूरी है। ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है, इसमें से एक चीज़ काम नहीं करती। और यहाँ पर जो हमने देखा, जिस किस्म के हमने स्ट्रोक्स देखे, जिस तरह की अप्रोच देखी, जिस तरह आपने फील्डर्स को पिक किया, और मैं इन जनरल बैटिंग की बात करूँ तो दोनों टीमों की तरफ से इस पिच के ऊपर बैटिंग परफॉर्मेंस जो है वो मतलब मज़ेदार नहीं थी, इनकरेजिंग बैटिंग नहीं थी और टाइमलेस
शॉट्स जो वक्त पे ज़रूरत नहीं थी। फिर जब बड़ा स्ट्रोक मारते हैं, एक कॉमन जो मिस्टेक देखी है तमाम बैटर्स में, कि वो सीधा फील्डर को पिक करते हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं बजाय कि गैप में मारें। क्योंकि अगर आप गैप में बड़ा हिट मारते हैं तो आपके पास 2-3 चांसेस हैं कि ना पूरा लगा तो चौका हो जाएगा, फिर भी ना अगर पूरा लगा तो 2 रन हो जाएंगे, और अगर फील्डर ने कैच करना भी है तो उसे भागकर मुश्किल होगी। लेकिन सिर्फ ये सोच लेना कि मारना ही छक्का है और इस बात की परवाह किए बगैर कि फील्डर उस जगह मौजूद है, ये कोई अच्छी बैटिंग वाली अप्रोच नहीं है ये, अनलेस कि आपको आखिरी ओवर में कुछ छक्के चाहिए हो। कोशिश जारी है लेकिन ये कम है काशिफ भट्टी और उस्मान कादर की जानिब से। अभी आपने जिक्र किया दोनों टीमों का, हम कहीं ना कहीं सलमान थोड़ा मार्जिन पेशावर को देते हैं, चलें क्योंकि उनका मोमेंटम बना है, वो 2 मैचेस जीत के हैं। लेकिन लाहौर ब्लूज का क्या कीजिए, इनकी अप्रोच का क्या कीजिए, जिनको मैच जीतना जरूरी था? हमने तो काफी कुछ किया, अब कुछ इन्होंने भी करना है। आई थिंक कि अप्रोच का भी, और आई थिंक द डिसीजन मेकिंग, उसको हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी आज प्री शो में भी। देखिए उमैद आसिफ इन दोनों से अच्छे बैटर हैं, दोनों से बड़ा हिट मारते हैं, और उन्हें बारहा ऐसे मौकों पर PSL में, नेशनल T20 में हिटिंग की है, लेकिन यहाँ पर उन्हें भेजा ही नहीं गया। और ये दोनों बैटर्स इस वक्त स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। वो इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है एट अ मच हायर लेवल, PSL में उन्होंने बैटिंग की है, रन्स किए हैं। सो उनको ना भेजने का फैसला, पिछले मैच में भी वो काशिफ भट्टी के पीछे आए थे, और यहाँ पर उमैद आसिफ बैठे हैं और देख रहे हैं, और निसार पिछली दफ़ा उन्होंने भी कुछ डिसेंट स्ट्रोक्स खेले थे। सो डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है इन्होंने अपनी बेस्ट ऑप्शन को मिस किया। जी, और स्पेशली जब आप देखते हैं कि 7 बॉलों पे 3 रन उस्मान ने बनाए, 9 बॉलों पे 9 रन काशिफ ने बनाए, और 2 फाइन हिटर्स आपके बेंच पे बैठे हैं पैड हुए हुए, और टीम आपकी स्ट्रगल कर रही है, तो डेफिनेटली आई एग्री विद सलमान कि डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कुछ मसला है। बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन बॉल थर्ड की जानिब जाएगा। यहाँ खेला नहीं चाहते थे लेकिन ये बाउंड्री लेंगे। ये 20 बॉलें लग गई है चौका हासिल करते करते, 100 रन भी मुकम्मल कर लिए लाहौर ब्लूज ने। कहते हैं कि जोर से घुमाइए तो इवन एज भी सलमान 4 रन के लिए जाएगा, ये इस चीज की एग्जांपल है। और इफ यू स्विंग हार्ड, स्पेशली ये कहा तो ऑस्ट्रेलिया में जाता था, इट्स एन ओल्ड सेइंग, इफ यू कट हार्ड, क्योंकि बॉल फ्लाई करता है। लेकिन आजकल जहां जो फिट हो जाए लगा दीजिए। चल रहा है, सब चल रहा है। 102 पे 6, 32 रन और 19 बॉलों पे लाहौर ब्लूज को चाहिए। हाफ वे थ्रू ऐसा लगा था कि शायद लाहौर आराम से ये स्कोर चेस कर जाएगा, लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया अपने आप के साथ। काशिफ भट्टी एक बार फिर थर्ड के जाने, ये बेहतर है, वेट किया इस बॉल का, लेट खेले हैं और गैप में खेले हैं, 4 रन हासिल करें, ये बेहतर बैटिंग है। ऐसे और शॉट्स खेलना होंगे काशिफ भट्टी को। जी हाँ, ये एक आखिर के 2 बॉलों पर ये ओवर लाहौर के हक में अच्छा हो गया। यहाँ पे 2 बाउंड्रीज मिली, और इस बार स्लोअर वन था, बॉल भी अच्छा था, लेकिन उससे भी अच्छा प्लेस किया काशिफ भट्टी ने। सो क्रेडिट टू काशिफ भट्टी। और यहाँ पर 10 रन 11 रन इस ओवर में बने, जिसके बाद अभी भी 28 चाहिए। सो होता यह है कि अगर विकेट गिर जाए तो टीम के लिए मुश्किलात होती हैं, लेकिन इस जगह ऐसा लग रहा है कि अगर विकेट गिर जाए तो शायद थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि वो बड़े हिट मारने वाले प्लेयर्स पीछे हैं, और ऐसे मैचेस को आखिरी ओवर में नहीं ले जाना चाहिए। रिक्वायर्ड रेट 9.33, और शायद अब यहाँ पे चांस हो सकता है, क्योंकि ऑन साइड पे बाउंड्री थोड़ी छोटी है और लेफ्ट हैंडर उस्मान कादर है फेस पे। हम जानते हैं कि इनमें एबिलिटी है बड़ी हिट मारने की, बहुत बार क्लब क्रिकेट में तो मैंने बहुत बार इनको बैटिंग करते देखा है, लंबे लंबे छक्के मारते देखा है, लेकिन ऐसा लगा कभी इन्होंने उतना सीरियसली लिया नहीं अपनी बैटिंग को, जितना टैलेंट इनके अंदर मौजूद है। आज निहायत शानदार स्पेल किया, 5 विकेट्स लिए, बहुत ही इकोनॉमिकल भी स्पेल था। और इस बार फील्डर जो हैं थोड़ा सा फील्डिंग लैप्स, जिसकी वजह से ये रन बना, लेकिन 1 रन बने या डॉट बॉल्स हों, ये दोनों पेशावर के लिए गोल्ड डस्ट है। और लाहौर को हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्रीज चाहिए, क्योंकि 3 ओवर्स हैं, 17 बॉलें अब रह गई हैं प्रिसाइसली, और 27 रन हैं। तो ऐसे में इन बैटर्स के लिए एटलीस्ट 1 बाउंड्री तो हर ओवर में लगाना बहुत लाजमी है, और जहां मौका मिले जितना मैक्सिमम रन जितना जल्दी कर सके करने चाहिए। और फेयर टाइम स्पेंड कर लिया दोनों ने अब क्रीज पर।
क्योंकि थर्ड की जानिब 2 बाउंड्रीज हासिल की थी, इसलिए फील्डर डीप है काशिफ भट्टी के लिए और उधर ही खेलने गए हैं। अच्छी कप्तानी इफ्तिखार की जानिब से, प्रोएक्टिव अप्रोच है ये, रियलाइज कर लिया था कि इस एरिया को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं काशिफ भट्टी। देखिए, अगर डेफिनेटली हर टीम के पास एनालिस्ट हैं जो उनकी मदद करते हैं, तो पिछले मैचेस में आपको याद होगा कि जब काशिफ भट्टी बैटिंग कर रहे थे तो मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रख के उन्हें आगे बॉलिंग की जा रही थी और वो सामने हिट मार रहे थे। तो मिड ऑफ और कवर वाली जगह है जिसको वो फेवर करते हैं। तो अगर लेंथ को पीछे रखा जाए और उन्हें शॉर्ट बॉलिंग की जाए थर्ड मैन पीछे रखकर, तो फिर उनके लिए मुश्किलात हो सकती है। फिर उन्हें यहाँ मिड विकेट के ऊपर से जाना पड़ेगा, समथिंग जिसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। तीनों फास्ट बॉलर्स पैडेड अप हैं, इनफैक्ट हेलमेट भी पहने, ग्लव्स भी, ऑल सेट हैं। एक टाइम पे तो नहीं जा सकेंगे। बड़ा शॉट है ये, हवा में, फील्डर हैं लेकिन पहुंच नहीं पाए। देखिए, बहुत ही पुअर रनिंग बिटवीन द विकेट के, इतना ऊपर बॉल, गैप में बॉल, फील्डर भाग के वहां तक पहुंच नहीं पाए और एक ही रन लिया दोनों बैटर्स ने। सो रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो डेफिनेटली ऐसी नहीं है जैसी लाहौर को जरूरत है। और यहाँ पर तो देखिए, जब बॉल एयर में इतना था तो पहला काशिफ भट्टी को देखिए पहला रन कैसा ले रहे हैं। तो इतना लेबर्ड ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट है, ये बताती है कि या तो गेम अवेयरनेस की कमी है या कोई फिटनेस इशू है। थिंक फिटनेस का ज्यादा मसला है, क्यों गेम अवेयरनेस का होना नहीं चाहिए जितना एक्सपीरियंस काशिफ भट्टी के पास है। एक बार फिर शॉर्ट बॉल, और शॉर्ट बॉल पे कंफर्टेबल नहीं है। यहां पर बॉल अच्छी जगह पर नहीं था, लकी रहे इमरान सीनियर, लेकिन शॉट लेंथ जरूर ठीक थी। लेंथ ऐसी थी जिसपे बहुत कंफर्टेबल नहीं होते यूजुअली जो लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं। अच्छी बॉलिंग की है इमरान खान सीनियर ने। 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। क्वाइट रेट 10 की है। बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है लाहौर ब्लूज की जानिब से। ऐसा लगा था कि जैसे आज शायद हम इनकी पहली जीत देख सकेंगे, लेकिन ना हो सका। लाहौर ब्लूज का मैच है और अली ब्लू स्वेटर पहन के आए हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर पैडल करना चाहते थे इस बॉल को, लेकिन पूरी तरह एग्जीक्यूट ना कर सके। 1 रन बनेगा और अभी तक इमरान खान और पेशावर, बेहतरीन बॉलिंग पेशावर के लिए इमरान खान की। 13 बॉलें रह गई और 24 रन। जब ये स्टार्ट हुआ था तो 28 रन चाहिए थे 18 बॉलों में। सो डेफिनेटली इमरान खान ने चीज़ों को पुल बैक किया है पिछले ओवर में 2 बाउंड्रीज के बाद। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि ये इसको फिनिश, इस ओवर की क्लोजिंग अच्छी हो इनके लिए, और उतना ही ज़रूरी कि लाहौर इस बॉल पे बाउंड्री हासिल करे। उस्मान कादिर है स्ट्राइक पे, जिन्होंने 9 बॉलों पे 5 रन बना रखे हैं। अपने जो बॉलिंग से अच्छा दिन, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा दिन रहा है, उस दिन को कैरी ऑन करना होगा। यहाँ पे आखिरी बॉल पे अगर यहाँ पे बाउंड्री हासिल करते हैं तो एक शानदार परफॉर्मेंस हो जाएगी, मैच विनिंग हकीकी में हो जाएगी। 5 विकेट्स के साथ इंपॉर्टेंट रन्स बनाना। छोटी बाउंड्री है, लेग साइड पे, मिड ऑफ का फील्डर सर्कल के अंदर है, फाइन लेग सर्कल के अंदर है। ऐसा काम नहीं चलेगा। अच्छी बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग। देखिए, मिड ऑन और मिड ऑफ और कवर्स ऊपर थी तो डेफिनेटली जो है ये डबल ब्लफ था। लेकिन अगर उस्मान स्टिल रहते तो जिस जगह बॉल की है सामने हिट मार सकते थे, लेकिन इतना पहले प्री मेडिटेट कर गए और इतनी जगह छोड़ दी कि बॉलर को पहले से पता लग गया कि उन्होंने कहाँ बॉलिंग करनी है। सो दिस इज समथिंग जहाँ पर बैटर्स को हेड ऑफ द गेम होना पड़ता है जब आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर को खेल रहे हो। तो बहुत ही शानदार ओवर का इख्तिताम, 18 गए और 110 पे 6। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि वैसे तो विकेट गिरना अफसोसनाक होता है, लेकिन यहाँ पे शायद अगर विकेट गिरती है तो लाहौर ब्लूज के लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा शगुन हो सकता है, क्योंकि 3 बिग हिटर्स पैड करके बैठे हैं और यहाँ पे बॉल डॉट हो रहे हैं। वैसे तो 24 रन T20 क्रिकेट में 12 बॉलों पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 विकेट्स पे बैटिंग साइड बना लेगी, लेकिन जैसी बैटिंग हो रही है उसे लग नहीं रहा कि अब ये बन पाएंगे। अगर विकेट गिरती है, उमैद आसिफ आते हैं
या निसार आते हैं। इवन हुनैन शाह ने सलमान बेहतरीन बैटिंग की थी, अच्छे छक्के दिखाए थे, 2 छक्के लगाए थे 2 बॉलों पे। ऐसी एक परफॉर्मेंस की जरूरत है। इलियास वापस आ गए हैं, रिक्वायर्ड रेट जो है वो 12 की है। इस चीज का इंतजार था, ये फुल टॉस है लेग साइड पे, इसे पिक किया है, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया काशिफ ने 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक है ये, यॉर्कर करना चाहते थे और अपनी लेंथ को मिस किया। फुल टॉस बनाया इसको काशिफ भट्टी ने और इस बार कोई गलती नहीं की, मिडल किया इसको स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। और देख रहे हैं एज अ बॉलर के शॉर्ट पिच पे वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर आकर उन्होंने उनको फुल टॉस कराई और फुल लेंथ पे बॉल करने की कोशिश की, जबकि पिछले दोनों ओवर्स में जितने बॉल डॉट किए हैं उन्होंने वो तमाम के तमाम शॉर्ट बॉल्स थे। सो गेम अवेयरनेस वंस अगेन, आप अपने सामने मैच चल रहा है, आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि बैटर कहां पे फंस रहा है। ग्लोरी की तलाश में इलियास विकेट हासिल करना चाहते थे, शायद लो फुल टॉस, शायद यॉर्कर करना चाहते थे जो कि गलत हुआ और लेग साइड पे फुल टॉस करा दी गई। एक बार फिर काशिफ भट्टी तैयार हैं, अपील है लेकिन ये लेग स्टंप मिस कर जाएगी। अच्छा आगाज हो गया है सलमान इस ओवर का, कोशिश करनी है कि मैक्सिमम रन इसी ओवर में बना लिए जाएं। देखिए थोड़ा अनलकी रहे शायद इस वजह से कि बैटर जो है इस बार देखिए पीछे खड़े थे, वो शॉर्ट पिच बॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस बार ये बॉल थोड़ा सा फुलिश लेंथ पे था लेकिन बहुत ओवर पिच नहीं था, लेकिन इसको प्रॉपरली खेल नहीं सके। हालांकि जिस जगह ये बॉल था, अगर अगले बॉल के लिए तैयार होते तो शायद इस पे रन्स बनते। बहरहाल ये वो माइंडसेट है कि एक हिट मारने के बाद वो केयरफुल हो गए कि अब बॉल पीछे ही आएगा और हमने देखा उन्हें पिछले बॉल पे स्ट्रगल करते। सो यहाँ पे बॉलर को थोड़ा स्मार्ट बॉलिंग करनी होगी। आउट हो सकते हैं यकीनी, जी हाँ बिल्कुल विकेट के सामने डिसीव किया स्लोअर वन से इलियास ने। बेहतरीन चेंज ऑफ पेस, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा, विकेट हासिल करते हुए काशिफ भट्टी की। चेहरे उदास हैं लाहौर ब्लूज के कैप में, लेकिन यहाँ पे जश्न का मंजर है, विकेट हासिल किया काशिफ भट्टी की। अच्छी लैंडिंग है, फास्ट बॉलर के लिए परफेक्ट लैंडिंग है ये। बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, स्लोअर वन, डिसीव किया, चकमा दे गए। सेंसिबल बॉलिंग, स्मार्ट बॉलिंग इलियास की जानिब से। भट्टी को वापस जाना होगा 25 रन बनाकर 116 पे 7। निसार अहमद हैं नए आने वाले बैटर और यकीनन इनको जो मैच से ऊपर भेजा गया है, ऐसी कोई ना कोई स्किल्स ज़रूर हैं जिस पे कोच और कैप्टन को इत्मीनान है इनकी और इनको उनसे ऊपर भेजा गया है। और हम बार बार उमैद का जिक्र इसलिए करते हैं इस सिचुएशन में क्योंकि उनको देखा हुआ है बड़े बड़े हिट्स मारते, इन टाइट सिचुएशंस में छक्के लगाते हुए उन्हें देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 7 मैच 11 रन, 6 रन उनके बेस्ट स्कोर है और उमैद से पहले हैं। अठारह रन 9 बॉलों पे। निसार में एबिलिटी तो है, क्या इस प्रेशर सिचुएशन में डिलीवर कर पाएंगे? और बिल्कुल उमैद आसिफ के पास एक्सपीरियंस भी है एबिलिटी के साथ। निसार ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, फील्डर मौजूद है, एक ही रन बन पाएगा। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जैसे आप कह रहे थे, खराब डिसीजन मेकिंग, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शानदार बॉल किया था इलियास ने, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी विद इन द स्टंप्स। एक चीज देखिए अली कि गुगली चाहे फास्ट बॉलर करे चाहे स्पिनर, रीड किसी को नहीं हो रही। काफी देर पहले काशिफ भट्टी इस टाइम ऑब्वियसली हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी से आए हैं और काफी पसीने में हैं, लेकिन बहुत पहले नजरें हटा चुके थे इस बॉल से। पांच रन बनाए उस्मान कादिर ने 10 बॉलों पे, क्या बाउंड्री हासिल कर सकते हैं? कोशिश जरूर की थी लेकिन एलिवेशन फोर्स नहीं हासिल कर सके, सिर्फ एक ही रन बनेगा।
उमैद आसिफ पिछले मैच में 18 गेंदों में 24 रन्स बनाए, लेकिन हमने उन्हें बारहा देखा है रन्स करते इन सिचुएशंस में, और बड़े रन्स भी करना जानते हैं और विकेट पे स्टे भी करना जानते हैं। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल बैटर को ना भेजना, कोई छुपे हुए टैलेंट का इंतजार है शायद। इलियास अपने ओवर का आखिरी बॉल करेंगे। ये उमैद आसिफ है जिनका सलमान जिक्र कर रहे हैं, टैलेंट से भरपूर है और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। ऐसी सिचुएशंस में बहुत बार बैटिंग कर चुके हैं, इसलिए उनको पता होगा कि इस तरह की सिचुएशन में कैसे बैटिंग करनी है। शायद उनको ना भेजना लाहौर ब्लूज के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। निसार, यहाँ पर एक ही रन बनेगा और पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद अच्छा ओवर को क्लोज किया है मोहम्मद इलियास ने। तो 4 ओवर उनके मुकम्मल हुए, 30 रन उन्होंने दिए एक विकेट पे और 119 पे 7 19 ओवर्स में। यहाँ पर वो नौयत आ गई मैच पे जहाँ पर अब उमैद आ भी जाए तो आते साथ ही उन्हें ही हैज टू गो, उन्हें बड़ा हिट मारना है और चांस है उसमें। लेकिन जब वक्त था, जब बॉलें थी और कह लीजिए कि कदरे आसान टारगेट था, वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड उमैद को यूज़ ना करना डेफिनेटली क्वेश्चनेबल टैक्टिक है। और मेरे साथ इस वक्त सिकंदर बख्त है। एक प्रेशर सिचुएशन में एक्सपीरियंस कमेंटेटर का होना भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आखिरी ओवर 15 रन चाहिए। और बहुत बार हमने देखा है कि इमरान खान ने जो आखिरी ओवर किए हैं एक टाइट सिचुएशन में, वहां पर वो विनिंग नोट पे फिनिश किया है। उन्होंने अपनी टीम को भी लाइन के पार कराया है। और ये पहला बॉल, ऑब्वियसली अब तो बड़े हिटों की ज़रूरत है और देखना होगा कि इमरान अपने तजर्बे का कैसा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ निसार को, उस्मान को, काशिफ भट्टी को कोच और कैप्टन दोनों ने लाहौर ब्लूज़ के ज़्यादा ट्रस्ट किया है बनिस्बतन उमैद आसिफ के। तो कहते हैं सारी दुनिया एक तरफ और कप्तान की सोच एक तरफ। जब आपको कप्तान बनाया जाता है तो ऑब्वियसली देखा जाता है कि आपके अंदर वो टैलेंट एज अ एथलीट, एज अ स्पोर्ट्समैन है और आप एक ग्रेट थिंकर भी हैं और स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, सब चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं कप्तान मैच सिचुएशंस में शायद मिस आउट कर जाते हैं किसी मोमेंट को। उमैद की बात हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि जो सपोर्ट स्टाफ है, जो कोचेज़ हैं वहाँ पर, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो रिमाइंड कर सकता है। क्योंकि आपने अभी कहा 24 रन 18 गेंदों पर उन्होंने बनाए हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, तो क्यों ना उस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए। इस वक्त वो डग आउट में आगे पीछे घूम रहे हैं और उनको सिर्फ ये हो रहा है कि ये ना हो कि आखिरी गेंद पे 6 चाहिए हो, मुझे पारी आ जाए। हो सकता है फिर भी चांस बन जाए उनका उस मोमेंट में, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है अब क्या होता है। और ये एक बार फिर बड़ा हिट, इस बार मिड विकेट के गैप में, लेकिन फील्डर आएंगे और कवर कर लेंगे। बहुत ही शानदार फील्डिंग और रीले थ्रो है ये। पास किया फील्डर ने जिसने गेंद को रोका और बहुत ही अच्छा उसे विकेटों तक पहुंचाया दूसरे फील्डर ने। 2 रन्स बने इस प्रोसेस में और अभी 3 बॉल्स में 11 रन्स। एक्सपीरियंस इमरान खान सीनियर अच्छा ओवर करते हुए अभी तक इन्होंने 4 रन दिए हैं, जिसमें एक लेग बाय है और ये बड़ा क्रूशल बॉल होगा इस ओवर का। कहीं बाउंड्री ज़रूरी है ताकि आप चेज में रहें। निसार स्ट्राइक पे है, 4 पे 4 बनाए उन्होंने। शॉट लगाया, फील्डर मौजूद हैं, 2 के लिए आना चाहिए। ओह, मिस कर गए। तो कहते हैं आप टारगेट को ओवरशूट कर जाओ। इस बार इलियास से ये गलती हो गई, रोक ना पाए अपने आप को। साहिबजादा फरहान थे, माफ कीजिएगा। साहिबजादा बिल्कुल स्प्रिंट उन्होंने अच्छी लगाई, बल्कि इतनी अच्छी लगाई कि शायद बॉल से आगे निकल गए।
इस बार निसार का कनेक्शन अच्छा था, लेकिन ये बहुत रेगुलेशन फील्ड थी और डेफिनेटली आगे निकल गए, अपने आप को बैलेंस ना कर सके और जिसके नतीजे में जो सिर्फ 1 या 2 रन होने चाहिए थे वो 4 रन बने और अब लाहौर को 2 बॉलों में 7 चाहिए और 1 बाउंड्री और 2 बाउंड्रीज दोनों के नतीजे में मैच का फैसला हो सकता है और सारी पॉसिबिलिटीज हैं, मैच जीतना, मैच हारना और सुपर ओवर। कोशिश करें कि सीधा खेल सकें, क्योंकि पिछले 2 शॉट्स काउ कॉर्नर है तो साहिबजादा फरहान काफी वाइड खड़े हैं, बहुत वाइड लॉग ऑन पे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सीनियर का बॉल भी अंदर की तरफ आ रहा है, मिडिल लेग पे रखा हुआ है उन्होंने। शॉर्टर बॉल ऊंचा आ गया है, गेंद कीपर ने कहा ये मेरा कैच होगा और आउट हो गए निसार। देखिए उमैद आसिफ आ रहे हैं और एक बॉल पे 6 रन सुपर ओवर के लिए चाहिए, तो बात वहां आ गई जिसका आपने जिक्र किया था। मैंने पहले कहा था 15 और अब कहा ये मेरी जुबान। यहाँ पे फ्रंट फुट का चेक और परफेक्ट लैंडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके साथ। और इस बार लेंथ को चेंज किया, इमरान खान सीनियर ने शॉर्टर लेंथ पे पहला बॉल किया है, जिसको जाहिर है टेल एंडर्स के लिए इतना आसान नहीं होता कि अगर एक डिसेंट पेस हो और उसके ऊपर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हो। और हारिस जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट एज एवर, मैं कहूँगा कि हर कैच जब आसमान में जाता है तो उनकी कोशिश होती है वो पहुँच जाए। निसार आउट हो गया 8 रन बना के, 127 पे 8 खिलाड़ी आउट, 1 गेंद बाकी। भी आपने जिक्र किया इमरान खान सीनियर का, स्मार्ट बॉलिंग में इसलिए कहूंगा क्योंकि टेल एंडर माइंड मेकअप कर चुका होता है कि मैंने बल्ला घुमाना है मिड विकेट की तरफ, वो एक्सपेक्ट नहीं करता कोई चेंजअप्स। अपने आप को एडजस्ट करना कि डिफरेंट लेंथ पे इतना आसान नहीं होता एक नंबर 9 के बैटर को, और पूरा अब इन्होंने इसका फायदा उठाया। नंबर 10 पे आए हैं उमैद आसिफ और बैट का नंबर 9 है, तो देखना होगा अब इस बॉल पे 6 रन ही ऐसे हैं जो मैच को एक बार फिर से इस मुकाबले को रीस्टार्ट कर सकते हैं। आखिरी गेंद 7 रन, बहुत ही अच्छा बॉल, यॉर्कर लेंथ, कुछ नहीं कर पाए उमैद आसिफ। और कहां से कहां लेकर आया है पेशावर इस मैच को, और लाहौर ब्लूज अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि ये 134 रन नहीं बना पाए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पेशावर जैसी टीम को रोक के रखा हुआ था, लेकिन पेशावर ने फाइट बैक किया और ये मैच जीत गए। सिकंदर, आपको याद होगा इस वक्त हुनैन शाह आपकी स्क्रीन पर हैं और बहुत ही डिसअपॉइंटेड लुक है तमाम लाहौर के प्लेयर्स पे। और दूसरे डगआउट में यहाँ पेशावर की जो टीम है और उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो नहायत सेटिस्फाइड है, क्योंकि एक लो स्कोरिंग मैच इस ग्राउंड और इस वेन्यू पे पहले खेल के मैच जीतना ये बहुत कम बार हुआ है और लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया है इस टूर्नामेंट में इस ग्राउंड के ऊपर पेशावर की टीम ने। और यही वो एक ऐसी टीम है जो कहीं से भी जीत को पकड़ लेती है, इनको नहीं फ़र्क पड़ता कौन सा प्लेयर आ रहा है कौन सा जा रहा है। इनके बहुत सारे कोचेस भी तब्दील हुए लेकिन इनकी जो रिजल्ट है वो नहीं चेंज होती। इनको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी परेशानी नहीं दिखाई अपने चेहरों पे जब ये डिफेंड करने आए 133 रन को। अपनी अपॉर्चुनिटीज का वेट किया, अच्छी लाइंस पे बॉलिंग की, और इसमें काफी क्रेडिट लाहौर को भी देना पड़ेगा। उन्होंने रैश शॉट्स खेले, कैलकुलेशन बहुत गलत थी, कभी रना बॉल आए, कभी बिल्कुल गेम कंट्रोल में था, लेकिन वो एक जो सिलसिला था विकेट्स के गिरने का, 32 पे पहली इनकी विकेट गिरी थी और 127 पे ऑल आउट हो गए। ओवर नंबर 11 से 15 में इन्होंने 24 रन बनाए और 2 की बैटर्स इनके आउट हुए।
यहाँ पर जो लाहौर की टीम है, जब वो बैटिंग करने आए तो इमरान भट्ट ने खासा शानदार स्टार्ट किया और काफ़ी पॉजिटिव लगे, और आते साथ ही ये देखिए खूबसूरत पुल स्ट्रोक्स एक, और ये टांग पे और शॉर्ट बॉल्स का फ़ायदा उठाया। रिजवान भी थोड़े एजी ज़रूर थे, लेकिन ये खूबसूरत 2-3 स्ट्रोक्स मारने के बाद इमरान भट्ट जब फुल कंट्रोल में लग रहे थे तो यहाँ बैट जो है वो उनके बॉडी से आगे निकला, और उसके बाद हमने देखा कि विकेट्स गिरने का जो सिलसिला था वो रुक नहीं सका। यहाँ पर रिजवान का एक बार फिर एक कह लीजिए कि पुअर स्ट्रोक यहाँ पर, और अपनी विकेट खुद गवाई उन्होंने, और फिर हाशिम इब्राहिम ने 1-2 शॉट्स लगाए। उसके बाद ये देखिए सीधा मिड लाइन पे है लॉन्ग ऑफ, और उसकी तरफ एक पर्पसलेस स्ट्रोक, और यहाँ पर हाशिम इब्राहिम जो नहीं करना चाहिए वही करते चले जा रहे तमाम बैटर्स। हुसैन तलत हों, वो कासिम अकरम हो, तमाम बड़े शॉट्स इन्होंने वहाँ खेले जहाँ फील्डर्स बाउंड्री पे मौजूद थे, और काशिफ भट्टी आए, और उसके साथ फिर हुसैन तलत जो थे कुछ देर उन्होंने रेजिस्ट किया, और फिर उसके बाद एक फैंसी शॉट खेलते हुए आउट हुए। और काशिफ भट्टी जो कर सकते थे थोड़ा बहुत उन्होंने वो किया, लेकिन वो हुनर नहीं है उनका बैट के साथ जो इस तरह के मैच से इन्हें निकाल सकता। और फिर उसके बाद इमरान खान का बेहतरीन लास्ट ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट लेंथ का चेंज होना और वहाँ पर उनको विकेट्स मिलना, और फिर लास्ट बॉल जो थी एक एक्सपीरियंस बॉलर वाली थी, और ये टीम इस वक्त अपनी इस जीत को एंजॉय
Yes, welcome to the presentation ceremony of AH Group presents Jazz National T20 Cup. And before we talk to the captains and performance, let me introduce you to the presentation party. I've got Dr. Farhan Isa is the guest for PCB. I've got Arshad Khan, Senior GM, National Bank Stadium, Karachi, and Mr. Tausif Ahmed, ex-cricketer and member Selection Committee, PCB. Right, first of all, Mr. Tausif Ahmed, he will present the AH Group Outstanding Performance of the Match Cash Award of PKR 25,000 to none other than Usman Kader for his brilliant spell of bowling. 5 wickets for 14 runs. Brilliant spell, Usman. Thank you very much. Now, I would request Mr. Arshad Khan, he will present the Player of the Match, just trophy, to none other than Mohammad Haris. Haris, ज़्यादा दूर मत जाइए क्योंकि Farhan Isa Saab will present the Jazz Player of the Match Cash Award of PKR 25,000 for your outstanding batting. 55 runs of 31 deliveries with 5 fours and 5 sixes. Haris, बात करेंगे. कैसा फील हो रहा है? बहुत ही शानदार इनिंग रही. इंटेंट काफ़ी क्लियर होती है जब भी आप बैटिंग करने आते हैं. जी बिल्कुल, जिस तरह हमने पिछला मैच भी कह रहा था सेम विकेट पे, तो नए बॉल पे बॉल अच्छा आ रहा था, पुराने पे उस तरह अच्छा नहीं आ रहा था, आपने भी देखा होगा. तो कोशिश यही थी कि सर्कल में जितना कर सके उतना ही किया और मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया और अपने स्ट्रेंथ पे खेलो. हारिस, कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना स्किल और जितना टैलेंट आप में है आप अब फिनिश नहीं कर पाए, एंड तक नहीं जाता. अब एंड तक जाएँ, आपके लिए भी अच्छा हो और टीम के लिए भी अच्छा हो. जी बिल्कुल, ये गलतियाँ मैं बार बार कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इससे जितना सीख सकूँ सीखने के लिए. हर टाइम इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन बिल्कुल ये मेरे माइंड में है कि मैं फ़िनिश नहीं कर पा रहा, क्योंकि सम टाइम होती है गलती है, 1-2 बॉल मुझ पर डॉट आ जाए तो मुझे प्रेशर आ जाता है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि अगर 5-6 बॉल भी डॉट आ जाए तो उसको मैं बाद में कवर कर सकता हूँ. तो यही जो गलती है कि मैं फ़िनिश नहीं कर पा रहा, जो 50 है उसको 70 में या 70 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो इंशाल्लाह मैं करूँगा आगे. सलाहियत की आपने बात की है, सब नेचुरल है या कोई स्पेशल किस्म की प्रैक्टिस भी करते हैं इसके लिए? बाकी चीज़ें नेचुरल थी, 2-3 चीज़ों पे काम किया था, उस पर मज़ीद काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अगले मैचों में अप्लाई करूँगा. All the best for the remaining games, Haris. Thank you. Well played. Now time to talk to the captains. First of all, I would request the losing captain, Hussain Talat, to please have a word with us. Tough luck, Hussain Talat. Halfway through, ऐसा लगा था कि शायद ये मैच आप जीत सकते हैं. अब मेरा ख्याल है बॉलिंग ने काफ़ी अच्छा एंड पे मैनेज कर लिया था. 135 जैसे उन लोगों ने स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है बैटिंग की तरफ से फिर वही एक बात जो हम शुरू वाले मैचों में भी कर रहे हैं कि एक तो बैट्समैन कम है और दूसरा पार्टनरशिप नहीं हो रही. ठीक है, पिचेस थोड़ी टफ है, उस तरह स्ट्राइक रोटेट नहीं हो पा रही. तो मेरा ख्याल है कि पार्टनरशिप हो तो फिर ही आप इस तरह के टोटल चेस कर सकते हो. इवन लो टोटल्स में भी कई दफ़ा प्रेशर आया था जब बैक टू बैक विकेट्स गिरती हैं. तो लास्ट गेम में भी, इस गेम में भी हमारे से गलती ये हुई कि हम बैक टू बैक विकेट लूज़ कर रहे थे. या पार्टनरशिप का आपने जिक्र किया, क्या आपकी टीम कैप में ये बात होती है कि शॉट सिलेक्शन जो आपके बैटर्स, स्पेशली टॉप ऑर्डर्स के जो बैटर्स शॉट सिलेक्शन कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं खराबी है? बिल्कुल, बात हर चीज़ पे होती है, पर ये इंडिविजुअल को हमने किसी को रोका नहीं है. जो किसी की स्ट्रेंथ है उस पर जाके वो खेले, पर सेंसिबल. पर मुझे जो फील हो रहा है वो एक यही चीज़ है कि पार्टनरशिप जब आप करोगे तो कई दफ़ा आप मुश्किल सिचुएशन से भी निकल के आके मैच ले जाते हो. तो जब बैक टू बैक विकेट जाती है तो जो बैट्समैन खेल भी रहे होते हैं उन पर भी प्रेशर आया था. आखिरी क्वेश्चन, जब एंड पे मैच थोड़ा फंसा गया तो हमने देखा उमैद आसिफ बैट करके बैठे थे, हमने उनकी एबिलिटीज़ देखी हैं PSL में भी, बाकी जगह पे भी, तो क्या बेहतर होता कि आप उनको थोड़ा ऊपर भेज सकते थे? हमने उस्मान कादिर का चांस इसीलिए है कि एक तरफ से बाउंड्री लेफ्ट हैंडर की छोटी थी, तो उस तरफ से हमने चांस लिया कि वो आ जाए, पर एट द एंड नहीं था आज हमारे उसमें, तो नहीं हुआ. ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग गेम्स, हुसैन तलत. राइट, नाउ टाइम टू टॉक टू द विनिंग कैप्टन, none other than इफ्तिखार अहमद. क्राउड के फेवरेट हैं आप, जहाँ भी आप जाते हैं क्राउड आपको फॉलो करता है, कैसा लगता है ये? हाँ बिल्कुल, हमेशा इन लोगों ने सपोर्ट किया है. जब भी आता हूँ तो बहुत शोर मचाते हैं, बड़ा एंजॉय करता हूँ. आज आपने बात की ब्रांडेड क्रिकेट आप खेलते हैं, आप इंटेंट दिखाते हैं, ऐसा होता है कि आप कभी कभी ऐसा खेलते हुए लो टोटल पे आउट हो जाते हैं? देखो, ये भी एक इंटेंट है. आप विकेट देख के और थोड़ा बॉल फंस रहा था तो फिर आपने ना सिंगल पे जाना है. इंटेंट 2-3 किस्म की होती है. जहाँ पे बॉल आता है बल्ले पे तो वहाँ पे आपने बड़े बड़े रन्स करने हैं. जहाँ पे नहीं आता तो एज ए प्लेयर आपने सोचना है कि यहाँ पे मैंने क्या करना है. तो वही किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी में. और आपकी बेंच स्ट्रेंथ की हम तारीफ करनी होगी. आज आपने कई लड़कों को मौका दिया,
लेकिन उन्होंने भी कमाल कर दिया। बड़ा मुश्किल है हमारी टीम में 11 बनाना, क्योंकि सारे परफॉर्मर हैं और जो भी नहीं खेल रहे तो हम हर मैच से पहले उनको सॉरी करते हैं क्योंकि उनकी जगह नहीं, मतलब आपने 11 खिलाने हैं और सारे परफॉर्मर है तो थोड़ा मुश्किल होता है। इतना स्ट्रेंथ होता है हमारे पीछे और परफॉर्मर है, तो यही है। लंबा टूर्नामेंट, आप उनको तसल्ली दे सकते हैं कि बारी आएगी सबकी? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि हम रोटेशन करते हैं, आज भी 2 किया, कल भी हमने 2-3 को खिलाया, तो ऐसे हम मिक्स करके खेलेंगे। All the best for the remaining games. Iftikhar Ahmed, the winning captain of Peshawar. Right, that's all we have from down at the moment. But don't go anywhere because we have a big game lined up. It's Karachi Whites taking on Lahore in just about an hour's time.